a lot of utility is being dumped on one part of the map, and this wall for Team OG, they really cannot contest once a lot of utility is being dumped on one part of the map, and this wall from Paradox just not Paradox, it's Ching. It just helps Team Revenant to have that little seed of doubt planted into the minds of OG that someone still could cross while we are trying to fight for a showers, and it isolates any sort of support from site. So you are basically fighting showers all through and through. And if you have two players like this pushing out a shot, it could be a solution. But this time around, you just have sheriffs. So let's see if they're able to do anything on the back of it. Revenant, they're moving towards this B side. Again, they should find it empty except for Raw Fuel, who has missed a lot of blades. And then George finally puts him to an early grave. Next. But Aziz makes up for it. And he's going for the fight stoically, bravely once again. Ching is not going to lose out on any of that. He's almost aware about the incoming flank as well. And once again, not a problem. Revenant don't fall prey to these eco rounds. RBK is known to be the sheriff master, so you gotta watch out for this guy. I mean, there's no way RBK wins the round, but still these weapons are expensive. Don't fight him. You're actually fighting him. Alright. They do drop a couple of rifles, but I think so money won't be a problem, at least for now. I mean, in future rounds it might come back and hurt you, but till now it looks like Revenant, they have this first half in their control. They have been looking very sharp with all these attacks. They have been able to get the right calls. They have been able to attack on the less stacked sites, and those A executes, those just have been flawless. The adaptations are there, the frags are there, the trades are all present. And yes, OG, they did win the pistol round, but those are the only 2 rounds they get till now in regulation. Revenant have won all 5. And they look to win their 6th as well. Let's look into the side. A slight change this time. Instead of going towards the lamps, the Jet and Raze both dashed towards the other side of the Viper toxin screen. And now it explains why they wanted to go for the Viper spit, but Ching, he's lost a lot of his teammates and he's surrounded. I don't think this fight plan's possible now, even though they've got this whole pit planted over here. They make their escape. They bait OG right into their hands. And now the B side's vacant. If they can race to the other side, they might be able to get the spike down yet. But as soon as they try to go for it, they're getting flanked. OG are mass teleporting. Spike planted. It's a 2v5 retake situation. And right to ace has a lot of util left too. There's a trailblazer, there's a flash available. The regrowth will help Ching if he's able to win first few early duels. But the great thing from OG, they're just waiting out the smoke. They know they have 40 seconds on the clock, so they are using every second that is available to them. The hookah jumps are coming in, but right to ace and Ching are just taking all these players apart. Tesseract finally somehow is able to get in, get the frag, but right to ace. Still in the 1v1 against Tesseract. It is going to be an important duel. Right to ace does not get waited because of the tap. He turns around, gets the frag, and Revenant. No way. They pull out a 2v5. What is that? No way they do this. Oh my god. Revenant Esports pull one from the brink and then they themselves call the tactical timeout. Calm your nerves, boys. Drink some water. Get hydrated. We have this in the bag. Revenant Esports adjustments to go brawling in the later stages of these rounds have been so good. I mean, I love how Ace and him were playing on the other side of the entrance of V-Long. At first, Ace was outside the box. At that time, they had a lovely crossfire established for anyone who would be jumping out of hookah. Even if someone came out from the defender spawn area, then Ace would be the one to be able to trade. It would be the Viper that went down first. But then when Ace went inside the box, I thought, okay, this is a bit dicey because then they can't trade each other out and they will have to be individually guarding both the defender spawn entrance and hookah instead. But you know what? When OG are jumping out of hookah one by one and there's smoke to cover the tracks, I mean, why not? It will work. I mean, didn't they have any sky flashes or something like that to help the players? Seekers were jump popped. Out? It was very late because after that the poison orb got popped too. So hookah was for some time a no-go area. But as soon as I think it was Aziz who tried to jump out of hookah first, he could have asked for a flash from Attitude to just, you know, help him isolate those duels.
it did not happen. And I mean, yes, Revenant are able to win the round, but I did see some problems, or I'd say some setup issue that I saw in the previous round. If you still wanted to go and commit that Viper Spit onto Yeah. the A side, the two Brimstone smokes could have been thrown on truck and default rather than the ones on side. So that was just a little bit of a problem, but Revenant were easily able to deal with it. Not easily, but Nice shot, 3-5 RV, post yeah. plant is something which you won't be able to pull off every time, but this time around OG with very little weapons once again are putting some heat. Paradox is able to shut down Aziz. And now into the side. So it is a 3v3. RVK has been able to recover a weapon, but Tesseract a little bit low. And let's see if OG are able to get this retake this time around or not. Nice spam by Paradox. That should swing the round, but Rawfuel hits one right back. Denies the plant. Paradox with the double spray. Bye. Make it a quad for this guy. Revenant Esports are playing so quickly. They are literally fighting these guys, brawling them out. I said that this game was looking like a chase at first, but now it's just looking like an absolute fight out. Revenant Esports just picking up the pace, dude. As soon as OG tried to crunch them from bot, they had quite some deep positions over here. Even the weapon was retrieved over there by RVK, and he was flanking them very quickly. Paradox, as soon as he satcheled into the side, he was still watching Hookah. So that awareness is just so good. Josh this time going for the same spot, setting up the showstopper for his teammates, but the double frag comes through. Rawfuel is finally killed. The revenge has been taken. But Labs controllers वॉल्यूम कट कर लो गेम दा अपना बता लो कर लिया जी कर लिया गेम दा कट करता मेरा माइक दूर से का ता करके आवाज कट आ रही थी थोड़ा लेफ्ट राइट हो जाता है बट बढ़िया अभी लेटेस्ट 7 है ओवरऑल बट राइटिंग में कभी-कभी थोड़ा सा हो जाएगा राइटिंग भी फिक्स हो जाएगी कोई सीन नहीं Aziz is all able good to now, answer right back in terms of getting a ping or two right to waste. The spam, it won't connect and the satchel won't either. So Paradox gets this fight down. Nice round. Peaks his stay and OG finally are able to get the retake done. It was all because Revenant were too eager to peek those common angles. But hey, you'll take the rounds given to you. Revenant and OG both have their win conditions established for them. For OG, their win condition हो जाना काका जैसे लगे रहो राइटिंग तो इजी हाँ राइटिंग मेरे सामने इजी है मेरे सामने listening before to make sure that the ball doesn't go through, and this time as well they use the nades. For Revenant on the other hand, every time OG tries to activate this timing bait, every time they want बस to ऐसा सा stop aim चाहिए भाई और कुछ नहीं Revenant, they चाहिए flip the switch and they go for the अलर नहीं हजे नहीं कीता Revenant see OG's moves coming from a mile away. And that's exactly why they have such a big lead. But this time, मैं थोड़ा busy से मैं दसूँगा दानू rewarded to Rawfuel and Tesseract. Even the heat won't be ये जोश ऐसा है ना जो इसका aim थोड़ा सा but the orbital strike towards Bath doesn't do anything. The Bladestorm doesn't find anything, and Tesseract picks one off from heaven. The flank from Aziz is already arrived. वैसे पैसे नहीं देते ता रुक जाना डेड जे सीन है look to make a sneaky entry पैसे off तो the दे defender's देते spawn हैं ब्रो entrance. But then they have to face Tesseract. Blackhawk turns around to surprise Aziz. That's nuts. Oh my god, they've got heaven control now. They could go anywhere. They could be in A, they could be in B. OG are thrown into a state of discomfort and disarray. They are so confused right now about where Revenant could be. But Revenant are not moving out of anywhere. They hold their ground. Get the bomb down too. Oh, the nice Josh had an opportunity there, and Rawfuel is just jiggling the angle, making sure all the blades are lost. But the problem is inside U-Haul, this judge is very, very powerful. भाई बाइंड पिक किसका है रेवेनेंट का They again need a miracle of a retake over here. Blackhawk still has a heaven under his control. He has to be somehow dealt with, and you do not have any ultimates to do so. Spotted down, RVK. Can he run him down? That's the main question. Rawfuel is trying to check the smoke. Blackhawk gets that frag. Josh with the judge is able to deliver too. So OG, great start to the round. But the mid round take the late round Revenant are just perfect. The adaptation, they are adapting just like water. They're flowing around the किसको map. सपोर्ट कर रहे हो गाइस ओजी के रेवेनेंट And OG cannot comprehend how is Team Revenant doing. आज खेलते नाल अनरेटेड Every time OG have used the orbital strike or हाँ ठीक है डन all these explosives just मेरी एक मीटिंग है थोड़ी वो करके फिर अपन खेलते आराम ना यार ना कोई सीन नहीं है
But whenever Revenant hit them, they are the ones who leave OG with third degree burn. ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਹੀ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਾ So ਕੋਈ you ਮੀਟਿੰਗ decide which one's ਕੋਚ going to ਕਰੀ win over ਕੋਚ here, whether it's fire or water. Throw a little bit of Avatar in the mix as well, especially when भाई you've got बाइंड Josh कभी pushing in and embodying the like spirit of the wind. जब over ये there टीम with his एनिग्मा jet. में थी तो बहुत Speaking of स्ट्रांग pushes, होता था Tesseract timing betrays him. The wiper ball drops. एक बॉडी शॉट एंड Great इज for डेड RK. Not possible today. बट वो कुछ ही नहीं करेगा And once again, OG start with a man deficit. नाइस शॉट रेयर ऑफ यू There's a lot of shots over here, but Rafuel is able to answer back with that operating shot. Blackhawk gets taken care of. मरा Pain shells will put Abik in a very tough spot. But he's किंग still टाइमिंग getting पकड़ेगा यार ओके नहीं beat. अजीज है By अजीज है Paradox now Ching playing this smoke. Aziz knows that there बस is अजीज मार ले तो something like that कोई सीन नहीं happening. है And Rafuel now will be challenged. That operator has to find something. He's not able to hit the shot, but Aziz on the other end just fell to Ching. Shit. The showstopper wasted. Not even a single point of damage, and Aziz is able to recover a weapon. Both the players of OG now have handles in their hands. And now the late round calling has to kick in once Planting again. The only. Clutchmaster, can he do it again? Can he win it for his team once again? A 2v2. Uh-oh. Paradox spotted. And bear in mind, just 2 bullets will take Paradox down. 30 He has seconds 45 left. HP to his name. And Aziz has a nade, has a boombot, has all the utility he needs. And He's given away sound. he has, but that won't matter because Revenant, they're running low on time. They can just teleport back to B, and then none of them will be in a position to intercept. Oh, this is the very Oh, bold plant. OG always been nice. successful in a nice spike plants, and Aziz denies अरे the अल्ट round. ठीक है अभी है इसकी अल्ट Oh my goodness. The one thing that OG had working for them was Switching playing sides. together. The one thing that could have won them the round were the trades, because OG were not in. To his name. अल्ट थी मेरे हिसाब से उसके पास Oh my. Back to B, and then none of them will be in a position to intercept. Oh, this is the नहीं very bold अच्छा एक किल के बाद plant. अल्ट आई OG है एक किल के बाद अल्ट आई है Yeah, they probably thought that they would be able to kill them as they go for the trades. Like I said, Revenant were in better positions and they were closer to each other. So I think that's what they were okay with. The risk they took was calculated, but the math can be better. Anyway, the numbers over here indicate 8 and 4, which is quite a good scoreline. But will they be able to convert this into a win? We'll have to find out in the second half. For my wings, I need my hands. This life is real. Can't play pretend. Came off the bench. I get it in. और बताओ गाइस क्या हाल मीट के चाल लिए हीट के लिए नहीं bro this graphics card is making my frames drop come with me if you want to get The all-new OMEN 16 with advanced Tempest cooling technology, now with 5 heat pipes and 4 thermal Tempest outlets. cooling The OMEN 16 technology. with 12th Gen Intel Core i7 processor to make you forget your frame drops. now that's cool Game on with Tempest cooling. Presenting Hyundai i20N line. It's time to play. Yes, I'm a Gen Z, or should I say, the Gen X. And I don't let fear hold me back from doing anything. I choose to move fearlessly to it all. Hey buddy, we need you to trim your beard for this next scene. What? Okay, fine, I'll admit it. I move fearlessly in most things, but I draw the line here. What if I nickel cut myself? Try this. Phillips. For my wings, I need my hands. भाई ये बेस्ट बनाया उन्होंने ना Came off the bench. I get it in. फिर ये बहुत अच्छा लगा लाइक नॉटविन का जो इंट्रो है ना ऐसे इन्होंने पूरा ऐसे Welcome back प्रॉपर to वो कर Urban रखा है Valorant Challenges South Asia, driven by Hyundai and our styling भाई partner is split Philips one में OneBlade. नहीं It's दी been थी quite a इन्होंने stylish गाड़ी match so far. BB को। OG have हाँ जी, हाँ जी, been किद्दां? one very good thing that is trying to deny the spike plan for Revenant Esports. कौन है But Revenant, हाँ जी, as हाँ जी, की हाल a चाल? mode of adapting, they don't resort to planting तेरा somewhere आवाज बड़ी else कट रही or है ये। some time. कट They रही है resort to just नहीं fighting back. हेलो
They could have expected that there अजय भी कट रही है। एक मिनट खड़ दो, for, एक मिनट खड़ दो, मैं डिवाइस चेंज he करना would है, have एक मिनट used रुको। that instead of peeking himself. That could be an assumption that could have been made. But wait a minute, Josh just hit a crazy shot on to Tesseract and able to take him down. And right to ace is just not expected in the spot. He also gets a frag. It was a very important pistol for OG to win, but it seems like it's going the other way around. The spike stopped in a very risky spot. They're throwing in everything over there. The smokes to cut them off too. Gotcha. And almost entirety of Revenant has rotated over here. In case somebody else isn't here, they're on the flank. Josh is already on the back end, so it's not like they can go anywhere else as well. Oh. Alright then. Alright then. I take my words back. There's still some fight left in OG. Revenant! We're so close to dying. Hello. Hey, but at least Antidote's run away with the spike. यार ਤੁਹਾਡੀ आवाज बड़ी अजीब आंदी पई है, पता नहीं मेरे ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। अजीब आ रही सुबह डिस्कनेक्ट करके कर Skill Gets to issue. save his life. on the CO ठीक है। But you still have to be very Nah, careful. bro, with the I don't know frenzy what because is the Josh has the issue. sheriff. Now it is a two-shot body shot weapon here for onto Antidote. एक मिनट चेक कर दो पहले Frenzy बस। is just better in run and gun situations. Hello. That is Hello. exactly what Hello. Andy is going to try. The spike gets ठीक है। down. की चक्कर आ। There is the frenzy, and he can just sneak into the smoke and then try to get the frag. He does exactly that. Oh, but Ching! Hello, Andy. Just sticks the spike. His player got taken down, but he never just stood up for the trade. He was like, "Yeah, man, you die. I don't care. I'm just taking the spike and getting the round for my team." I'm sure there must have been a moment of hesitation, a Around moment wala. of doubt where he was like, should I go for it? And then when he heard Antidote back in the way, even when Antidote Glitch हो रही hesitated, थी। Hello Nikhil, Shake what's did up? it. It Ha all ha, comes I'm a down to monkey. nerves, and it Welcome all to the comes stream, down monkey. to, How you doing? हाँ जी हो गया। what's the polite word for it? Cojones at the end of the day. Glitch हो रही थी। The determination. पता नहीं, but मैं सुने में तो सही आ रही It है। takes guts to do that, अब dude. देखो ना टेस्ट। तो माइक पे जाके Once again, in this हेलो round, you see हेलो this from OG. हेलो They are 1 2 couple of 3 shots 1 2 now. 3 Now माइक टेस्ट Hoshiarpur, माइक टेस्ट। And they are disrespecting the Vipers. Oh! करने And तो they सही will है। get torn to pieces. Spike down B. Revenant, they just भाई लेकिन डिफ्यूज हो गया there, यार। and Anti is given away his position with a bird. ये राउंड अपना था OG का। So best he can do, get one. Right to ace is low, so that is the best he could do right now. The frenzy is there. He will get that pick on अरे। right to ace, but then Paradox peaks at the perfect time, gets the refrag. Heaven and And fracture। Revenant, they are trying to make things look very easy because a 6-round deficit for OG. It is a little bit दिक्कत too हो big सकती है because OG it is के only लिए। Aziz performing till बट now. बढ़िया कल एग्जाम है Other किस players कौन have से not tried सब्जेक्ट till का? yet. मेरे वालों ही होनी है, पता नहीं ब्रो। उन सही आ रही है आवाज। He was the most क्या consistent अजय भी फटी player फटी आ with रही है। 1-2. He would often be the carry उनका of the team, बढ़िया। and now हाँ। he's in charge once ठीक है। again. एकदम मैं मेरी ठीक क्या है? सर्वर चेंज कर दी। हाँ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। But now ना that ना OG मेरे have the वालों ही guns, सीखा मैं पता they लग need गया to ਸੀ। play it a वॉइस little more careful. मीटर ਤਾਂ नहीं यूज ਕਰਦੇ। They try to run it down पता like नहीं किस Revenant. होगी। It वो could कोई still issue be a होगा। bit एक बारी फिर क्या? problematic, हेलो हेलो especially हेलो, with Ching being present. फिर Any other day, any other smoke, if कितना? फे हो रही होती। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। सर्वर चेंज करके देखा। हांगकांग या हेलो हेलो क्यों ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ नहीं आ रही। Jackson gets that flag on the right to ace, is able to equalize the numbers, and now Josh will feel a little bit of trouble. There are two Best players friend still political on the pass, so they go thoughts। for the CD plant ये instead, कौन is सा what I subject think. है? हेलो, And हेलो, Josh हेलो। is तुम able to करते get क्या a हो? flag to his name. हेलो गेम्स So OG, हेलो हेलो they हेलो। also show that they are the ones who आ रही also मेरी can, आवाज हाँ आ जी रही आ है? रही है आ रही है। adapt according to situations, ओके adapt मैं according to नवा माइक player लेता हूँ positions, उसके and they थोड़ी should पै be गई able है। to get this अच्छा pick वो होता until होता we समझा do मैं। see some hooligans मैं coming लेता है in. शोर SM7B। Andrew's already Oh. very low on HP. His only job is to just बहुत बढ़िया maintain माइक है। presence over there. कंटेंट He can't do much कंटेंट killing, बनाओ but ना I take बनाओ my words back. पैसे तीजा पट्टी बढ़िया दुद्ध हाँ Very low तीजा HP. बढ़िया He's होने just चाहिए। able to build that pressure up and make it feel a little uncomfortable going into the retake. Good adjustments from Revenant, but OG were still आज ये जो मैच चल रहा है because of the अच्छा better को weapons. मैं भी लाऊंगा। But भाई, boy, oh boy, they made मैच चल Revenant रहा है esports थोड़ा जा set. अनएक्सपेक्टेड या। The judges from हाँ बट Josh ठीक Who है are the अपन मान favorites? so अपन difficult मान to सकते get हैं out बट of. फिर भी कि हाँ ठीक है वो Plus, when जी ने he's नहीं pushing you प्रैक्टिस down की थी too. उन्होंने इस मैच Blackhawk's में। own ठीक है Molly. चलेगा। I mean, who else is capable enough of doing Who that? are the like Andrew favorites the only according to way you? He could just hold all the Favorites way in the back sense
Makes Clear. Revenant a little Like paranoid to win about this match, to win this match. OG. Still, that was a bonus But round for Revenant Revenant. They didn't even have टक्कर a lot देगी of पूरी guns, they पूरी. just had a bunch of pistols, like 4 Spectres at max. Because So it was Revenant still quite like good. as a team बहुत उन्होंने like Once next again, the level OG, they are वो hitting हो the गया B भाई side. improvement and Now also. drone will spot right to ace and he will escape, but he has support. He This has is support split from 2, OG. right? तो इसके अंदर ही OG, last time I they think have who got won the right- OG first won. split? got OG the won right split idea. 1. OG ने जीता Let's see था. if they execute in time because exactly the two players There on was like flank they gave a will lot. I think it was They didn't Godwin lost who gave a lot they of didn't shots, lost right? a Still a single whole minute match. left on They the didn't clock. lost a single match. They're already behind them. But OG are intercepting nice. this. They prepared But I for this remember one. there was a lot of upsets, Oh, right? they walk VLT into a lost, trap. and like they were Revenant expecting is- that हाँ VLT split may win one against में out Godwin. थी. What kills the VLT gap, भी but out maybe थी. not फिर yet. और भी like Oh, he's throwing in unexpected everything. He doesn't teams want out them थी. to fight But him. OG won OG इस pivoted बार to the A as तो well. चल ही They रहा है. realized that God's this Reign कल defeat जीत गई push तो must qualify come at कर a गई है cost. playoffs के लिए. Revenant must have already vacated the A side Oh, because nice, they thought nice, it's all nice. empty. So like, since I don't follow this, like what is the system? Like what is the compy system in India now? Like this is Indian esports, right? And like you are at the cusp of it. Like you. एक सेकंड देना मैंने कॉल आ She रहा does है. not हेलो. have any हाँ, more कोई नहीं, loot कोई नहीं. left. Right to ace has 2 births and a regrowth too, so this will be an जितने important करें उतने ही है. तो क्या हुआ? from right to ace. The RVK goes a very good molly, stops the players, forces them to rotate back all around, and where the players of Team OG are positioned. But both the players just get taken down in Black Hawk देखना पड़ेगा भाई. through the wood. Just eliminates the player, and Revenant, a phenomenal retake, will give हाँ वो them तो मेरे को पता है, वहाँ से चेक कर the सकते हैं. 11th. I don't think it was much of a retake. Revenant were positioned to win चलो this मैं check right from the करता हूँ. beginning. What a great recovery. I thought Revenant were done for as soon as they walked into that trap. Okay. When they pushed out a bath all that time, they left the A भाई side इतनी नहीं होती, empty. दो They were maximum ready होती to है. stop OG from an imminent B hit, but OG adapted अरे वो really well. सबकी They नहीं ना planted the होती. spike, and then the crunch comes through. डिपेंड अरे नहीं नहीं भाई Still डिपेंड have control of A समझे नहीं shot, आप. and डिपेंड Aziz करता है stuck alone over अकाउंट there. टाइप कौन सा है. Revenant Esports, they regrouped instead. हाँ है तो उसमें भी बहुत सारी चीजें Paradox होती है. was way behind enemy lines, and then he makes those मैं plays देखता too. हूँ. मैं देखता हूँ कितनी है. And simply by कितनी virtue of maximum him मैं being देखता present हूँ. over there, he gave मेरे को जितना all याद the है 2 information है available max to limit. Revenant Esports. Revenant were also considering coming in via a flank or coming in via मैं defensive ट्राई करता spawn. हूँ बट मेरे हिसाब से 2 That मैच push लिमिट from है. Paradox gave them all the information they needed. They regrouped together and the trades just swing heavily for Revenant. They've been very good at adjusting like this. यार The वो entire डिस्कॉर्ड game, दे चेक not just कर in रहे this हैं. half, even in the previous half. क्या हाल है you गेम see जो? How good position हाँ से they're मेरे in. Western मैंने क्या body. कर रहे हो? हाँ मैं वो देख रहा सीधा Razer साउंड बोर्ड जीत. किला आया. वो बच OG on the other hand have been प्रॉपर. kind of reading these flanks. स्टीव and डालो they've been अपने अपने डाल लियो. outplaying Revenant हाँ, all this पाऊंगा time. मैं. Because Revenant Esports are पाऊंगा, just पाऊंगा. so much better at trades. They're still हाँ, able so I to was make asking up you, the deficit. हाँ. एडिच हैगा की मतलब what is the overall like ओवरऑल आई गेस 1 के 2 टीम्स मतलब जो भी जीतेंगे 1 या 2 टीम्स विल गो फॉर असेंशन. असेंशन इज लाइक और भी ऐसी टीम्स के साथ लाइक पेपर एक्स एंड वो सब टीम्स के साथ मैच होगा. इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करेंगे. अभी तो सिर्फ इंडियन टीम है ना. इफ दे विन तो फिर दे कैन रिप्रेजेंट देयर टीम लाइक इंडियन टीम्स ओवर द इंटरनेशनल में. Crazy shot out to Josh. oh that's He was nice. just jumping for information. इसीलिए हो रहा है स्प्लिट Just 1 gets स्प्लिट 2 वगैरह completely ना. shut down. Right to his blinds. Right with the drone over there, but it does not matter because Tesseract will take his head off. And Revenant, Spike they planted. are this time not able to stop the players of OG from taking the B side. And I think this should be a safe call instead. भाई ये अभी 5-11 डिफेंसिव मैप नहीं रहा. And it अभी ये is. डिफेंसिव मैप नहीं Revenant रहा. give it up. अभी ये अटैकिंग OG are मैप finally नहीं रहा. making these brute force executes work. देखा मैंने. बाकी डिपेंड करता है यार The good thing for टीम OG, पे. they'll have two very ये क्या good पूरा items ready पूरा next round. लाइनअप ये आपकी RVK एनिग्मा वाला है या मतलब पूरा नहीं है. पुराना एनिग्मा वाला पूरा पूरा नहीं है ना. Draw fuel if Excalibant to Tesseract. VL, Excalibant to ये But yeah, VLT that yeah, team- right VLT right right. बाकी सारे EG वाले हैं making बट sure that EG के these- पास अपना these weapons are taken SCA का away roster from the है. hands of Team Revenant. Because even though they Okay. are definitely winning the rounds, but they haven't been एंड that clean. हमारा They are मैच also किनके साथ है ये struggling. ब्लीड They'll still be able to afford a BBQ purchase, चिकन ये सब maybe टीम्स not जो हैं now, उनके साथ. because that rifle was उसमें of भी हम Paradox. जीते हैं. And स्प्लिट Paradox 1 में won't be able to buy. सेकंड Jim थे. does not have enough money, and स्प्लिट neither does Right to 2 Ace. So this should be a safe में call पता नहीं उस overall. टाइम में थाईलैंड था. And OG एंड on paper should have enough अभी on their side. सिंगापुर में हमारी टीम खेल के लाइक उसमें
वेलो टू एशिया में हमारी टीम खेल के आई है, एज अ सिंगापुर रिप्रेजेंट कर रही थी और वो जीत के आए गोल्ड मेडल लेके। अरे दैट्स नाइस. मतलब तो ये there's no Indians in the lineup right now. नहीं, पूरी एससी टीम है हमारी. ठीक है, मतलब इसके ऊपर मैं कोई फॉलो अप क्वेश्चन नहीं पूछना चाहता, छोड़ दो. नहीं, क्योंकि एससी टीम है ना प्रॉपर. तो मतलब any reason why that is done? मतलब not from का रोस्टर ही एससी का उठा लिया ना पूरा. अच्छा, इंडिया का रोस्टर नहीं है ना अभी. पहले इंडिया का रोस्टर था जिसमें यू कैन प्ले, यू कैन हैव लाइक 1 or 2 मिनिमम लाइक प्लेयर्स इन योर टीम. नहीं, बाहर के प्लेयर्स इन योर टीम. तो राइट नाउ व्हाट लाइक, जैसे फॉर एग्जांपल वी लुक एट जी के पास. हाँ, तो जी तो भाई फ्रेंचाइजी है ना. जी तो फ्रेंचाइजी टीम है ना. तो उनको तो स्लॉट मिला हुआ है ना वहाँ पे खेलने का. राइट, फ्रेंचाइज स्लॉट. बाकी सारे लड़ रहे हैं, बाकी सारे ये जो मैचेस हो रहे हैं इसे वो स्लॉट के लिए तो लड़ रहे हैं. राइट. Got it. ये बीच में सारे कम रहे. अरे वो डिस्कॉर्ड पे बैठे हैं ना, तो वहाँ पे वो साउंड बोर्ड आया, वहाँ पे तुम जा सकते हो. बजाना है क्या फिर से? लो. अच्छा भाई, एक बार ही बजाना होता है. Early out drone clearing out A shots. Spots Black Ops. मैं कहा भाई बारी सुन I लो. don't think so. That will be a lot of trouble. But Anti, what? He just sidestepped the showstopper and puts the bullet in the head of Paradox. Comeback लग रहा है क्या? बड़े आराम से. But now it's a 4v4 retake without. बोल तो रहा हूँ, EG अपना OGs versus Revenant में 70% चांसेस है कि OG जीतेगी. But also there are chances के like OT भी जा सकता है या क्लोज जाएगा मैच. तो ये मैप सिलेक्शन किसका था? ये तो रेवेनेंट का मैप सिलेक्शन. That's another eco for Revenant. They don't have money, and neither do they have ultimates to swing this round. So it has to be. देख just रहा हूँ मैं, pure देख के aim if they बताता want हूँ, to get to signing their कर रहा हूँ. 12, but OG, they're looking to get back into the game. Okay भाई. Great round, great trades there, and I still cannot comprehend how did Anti just sidestep the showstopper and was still able to find that frag onto Paradox. That was something insane. But was of हेलो paramount गोपी, importance. कौन बैठा साथ में? Held ये चैट में ऊपर देखो, players of शिवम Team कपूर 4 नाम से है ना, to ये enter मेरे the दोस्त side हैं, ये बैठे हैं without डिस्कॉर्ड any में मेरे fear साथ. because Showers was still in their control as Anti was Okay. still alive. A very important frag, and that's where the round fell. I mean, the retake attempt was there, but OG with the smokes out CD, with the volley out CD, they just stopped every sort of push, and Aziz. The secret did not go to Ching, so they might not expect this player over here, but Aziz in that off angle. Oh, never mind, he just checks. Although he's not able to win the duel. But OG on the other hand are able to find frags left and right. Ching with the double. But the teleporters will be hit. Stream करते हैं वो. And Revenant. तो भाई 10 तो stream कर दो. Can also wait. Maybe go for the weapon which he opts. चैट में पूछ रहे हैं आप. Once upon a time करदा सीगा bro. Okay, now has left, so it has to be fast. But hun नहीं करदा यार. I don't do it anymore. But OG, they're ready. I mean, if somehow No plans to do it also, which is why I said don't do it anymore. Now the smokes and molly once again just being thrown in. मतलब सब्सक्राइबर बढ़ाने का प्लान है तो बढ़ा लो भाई. त्याग चुके हैं ये सब. If they played with discipline. मैंने 1.5 साल स्ट्रीम करा है, but I think वो रिवॉर्ड पता है क्या होता है? I think I'm sure you'll have a different perspective, but मेरे को लगता है कि जो expectations होती है ना, अगर वो मीट ना हो ना, तो फिर वो रोज का एफर्ट मारना नौकरी लगनी शुरू हो जाता है. And when you already have a full time job, तो लगता है कि बेंच एक नौकरी तो कर ही रहा हूँ, दूसरी क्यों करूँ साथ? That's the reason why I don't stream. हाँ, वही depend करता है. वही ना, सबका अलग-अलग perspective है, वही बोल रहा हूँ. Right. Some take it in other way, some take it in Oh, other way. you needed some support for Aziz. And Tesseract and Avik, as you said, are just stepping up right now. And they are getting those trades perfectly. The entries are being thrown in from raw fuel too. भाई मैं स्ट्रीम नहीं करता हूँ, मैं स्ट्रीम देखता हूँ, और वो भी वाइल्ड पाजी की. और जिसने लाइक नहीं करा ना, फटाफट से लाइक कर देना. What he was able to do in the defense Why after you the first few should rounds of attack. Do it. And I'm OG, getting a they good have streamer forced and the players of content Team creator Revenant to from call you. for a timeout. Now what's the strategy करवाएंगे here? इनसे. Because essentially रुक there जाओ, is not थोड़ा a time flaw in the concept of defense that Team Revenant has.
it's just OG choosing the यार right चक्कर side पता है and क्या होता है, मैंने choosing the स्ट्रीमिंग right शुरू place करी for थी themselves. कोविड के बीच में, Because I जब remember दोस्त from थे where साथ Comeback में all करने started, वाले there सब, was the Blade उसके बाद Storm ये हुआ against, कि मैं तो कर रहा था for Team एंड मैं Revenant. करता था मोबाइल And गेमिंग, then लाइक Jumpy कॉर्ड comes out मोबाइल long and his head करता gets था मैं। taken off by Aziz. तो That's चक्कर ये था कि unlucky मैं तो way भाई to go मतलब एक down. माइलस्टोन होता है ना कि भाई And कंटेंट क्रिएटर बनना है, that's एक्टिविजन के that लिए is वो भी बन exactly गया। they lost the round and ऐसे were तन्वी losing वगैरह की रेड भी आ गई, दो So if मतलब OMEN 2-2.5 हजार sacrifice keep सब्सक्राइबर भी हो गए। happening, OG फिर will मेरे को लगा यार really, मतलब अब really क्या have a व्हाट strong नेक्स्ट, chance मतलब of coming back कैसे into the game. 10 Otherwise, 20 the 20 की recalls, वॉचिंग भी bro, आ I जाती थी, really have 10-15 no की, questions बट वो वही है कि about it. जैसी Even गेम if डेड they हुई are वो just एंड दैट perfect, गेम इज डेड टुडे। they just need to be तो according to the फिर usual वही लगा path. कि यार मतलब व्हाट एम आई Revenant डूइंग, has एंड been लाइक doing it. एज आई So सेड मैं OG नौकरी will पहले ही have कर रहा to था, find an answer, मैं कहा यार and let's ये see तो if नौकरी Revenant जैसे wants to लगना get शुरू हो back गया, into दोस्त भी this नहीं खेल game. रहे अब, मतलब कितना ही कर लेगा ना बंदा। या देखो दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग वाइल्ड बाजी कि अगर साथ खेलने वाली बात हो, अगर कोई हो ग्रुप जिसके साथ में मस्ती कर सकते हो, ये कर सकते हो, तो करने का मन भी करता है। वो तो है भाई, क्योंकि फेम वेम मनी वनी इज नॉट द मोटिवेशन, मतलब आई एम नॉट डूइंग इट फॉर दैट, मैं तो फन के लिए करता था। फिर वो फनी खत्म हो गया उसमें, फिर वो फनी खत्म हो जाए तो फिर नौकरी लगने लग जाता है, बस वही दिक्कत है। बट इंशाल्लाह करेंगे, जरूर करेंगे भाई, मतलब मन करा तो पक्का करूंगा। Paradox has arrived to rescue him, but there is nobody fighting him. They're so aware about this, and OG positioned themselves perfectly. Paradox doesn't even have any util to nade them out to its backside, and Ching is now isolated. Once again, trade's not available for Revenant, and OG are playing picture perfect Valorant. What a round for OG. I mean, we did not see the first battle out B-Log, where the entry was वो तो होता ही है। taken away by the player of OG, and then into the कैजुअली करते थे, RVK and Aziz. बट वही है, बाद में अकेला बंदा जब पड़ जाता है फिर लगता है भाई क्यों कर रहे हैं। With an operator in hand, he still was able to buy a lot of time. Josh, Paradox could have. I mean, one more second is what Paradox needed over there to provide some support, and the round could have fell for Team OG, but that did not happen. And once भाई again, Revenant आई एम द डेफिनेशन ऑफ अ नूब गेमर। जो ग्रुप में एक बंदा होता है ना जो बॉटम फ्रैग कर रहा होता है, मैं वो होता हूँ, पर सबसे ज्यादा बकवास भी मैं ही कर रहा होता हूँ टीम में। एक किल लेके मैं सबके सामने चढ़ रहा होता हूँ, देख रहे हो कैसे मारा मैंने, मतलब मैं वो वाला इंसान। they are. We are still keen on heading the B side. भाई मैं प्रो नहीं हूँ भाई। Wait, are they for real? All right, then they want to भाई contest the मैं Viper तो spin. They wouldn't expect that. आई वुड, देखो इफ यू डोंट कॉल योरसेल्फ प्रो, and like, the Viper spin. अगर Okay, तुम so इमॉर्टल that- हो, since the pit is here, the rest of राइट, Revenant तो would be मतलब on अगर A. आप इमॉर्टल 1 2 3 असेंडेंट भी हो फॉर दैट मैटर, मेरे लिए तो बहुत प्रो है Can भाई still वो। hit the DPS. मतलब मैंने अपने कजन को अकाउंट दे रखा था, मेरा अकाउंट बचा दिया उसने साला असेंडेंट 2। भाई मेरी आ रही थी 6 किल 8 किल, ठीक है, मैंने कहा औकात अनुसार अपने आप नीचे डाउनग्रेड कर देते हैं। पहले मैं हार्ड स्टक था सिल्वर पे, अभी मैं गोल्ड 1 गोल्ड 2 खेल रहा हूँ, बहुत अच्छी लॉबी है मेरे हिसाब से। मतलब अगर मैं अच्छी टीम के साथ खेल रहा था तो मैं वैसे भी गोल्ड पहुंच जाता अपने बलबूते ही, बट अभी कोई डी रैंक नहीं हो रहा और मतलब फन आता है, मतलब अपनी लेवल के लोग लगते हैं। असेंडेंट प्लैट डायमंड में मेरे को लगता था भाई आई डोंट बिलोंग हियर। ट्राई हार्ड बंदे आते हैं ना तो उस वही है। लॉबी में, गवाते हैं Josh can come up with some भाई good ट्राई hits. हार्ड तो हर He लॉबी में had होते हैं, ways and मतलब black जब मैं with ब्रॉन्ज those सिल्वर भी खेलता था तब भी ट्राई हार्ड होते हैं। आई वुड नॉट से, देखो कोई भी रैंक में जो भी होता है ना, मतलब कैजुअल तो बहुत ही कम मिलते हैं आपको, रात को 3-4 बजे खेलो तब मिलते हैं आपको कैजुअल जो बकर मारने आए होते हैं, तो वो वाला सीन रहता है। बट वही है कि जब तक साथ में दोस्ती यारी ना हो ना, फिर वही होता है कि यार इतना ट्राई हार्ड करके गेम थोड़ी खेलनी है भाई। गेम इज मेरे लिए, गेम इज सपोज टू बी हैविंग फन। अगर मैं फन ही नहीं कर रहा तो फिर क्या ही मजा है ना, मतलब मैं इतनी मेहनत कर करके 6 किल ले रहा था, ये तो नहीं करना भाई, ये नहीं करना बस, Finally, Josh gets a frag. तो वही वाला फंडा था। They have 19 HP left. Aziz takes Oh, one bhai. and then the ace too. So Aziz says if the other players are not Ace stepping karega up, bhai, I'll ace. just make sure that I fill in their shoes. And OG, they have equalized in style. भाई इक्वलाइज कर It's गए। the worst time to have an economic meltdown. कहाँ नीचे थे? At least Revenant will be able to afford weapons in this round, but with Aziz भाई खोल दिया भाई, खोल going दिया। in पूरा भाई उसमें। absolute god mode, he's already farmed up his ultimate once again. The ace is just the cherry on top of the cake. It's a bold statement that will definitely destabilize the morale of Revenant Esports. Having your opponent start to pop off Thank now, you, he's bro, already thank you, crossed Nikhil. the 30 bomb अगर mark. कभी तो स्ट्रीम गेमिंग करा तो करते हो होपफुली तो बस स्टार्ट स्ट्रीमिंग का बटन दबा दिया करो, इंटरेक्शन करो, बढ़िया बंदों से फन करिए, स्ट्रीम करो, जॉब के They have a trailblazer and they're also closer to एग्जैक्टली यही तो मैं बोलना चाहता था कि भाई मैंने वो स्ट्रीम ना, देयर आर लॉट ऑफ स्टफ दैट यू Aziz with the showstopper will take care of Paradox, but ठीक है, Josh कई जैसे तुम survived. सोचते हो ना कि भाई जॉब लगने लग गया, तो जॉब के वे में मत देखो ना, यू प्लेड लाइक Wants to यू take वांट over टू the smoke, does so.
But right वी आर away प्लेइंग द gets a गेम frag with a trailblazer. फन के लिए हाँ भाई टाइम And पास कर Black Ops रहे हैं gets या one too. फन कर रहे हैं और Anti कुछ नहीं answers right back onto Josh. ब्रो चक्कर यही है ना, मतलब आई टेल यू, मैंने छोड़ा ठीक है समझता हूँ मैं भाई कई बार नहीं आती ये सब Exactly. He is गेमिंग coming back with गेमिंग the frag. गेमिंग इज कंप्लीटली He gets- सेपरेट. देखो he gets गेमिंग इज अ solo कंप्लीटली fight सेपरेट isolated टॉपिक. against Black Ops. चक्कर है ना, मेरी ना And टीम में ना that लोग was- हैं, that was लाइक not आई well हैव अ 3 पीपल that Black टीम Ops would have और taken an जिनकी all एवरेज एज इज right place 32, 1v2. जो कि सारे मुझसे बड़े हैं. मैं हूँ 28 साल का. तो इवन दो इट्स अ कंपनी जो कि फुल्ली ग्लोबल है, सब समझते हैं कि भाई क्या है क्या नहीं. मैं फेसबुक पे तो कर ही रहा था ब्रो, मतलब मैं अगर क्रिकेट स्ट्रीम करता था फेसबुक पे, मेरा पेज देखना 2,500-3,000 हजार लाइक लाइक्स आए हैं मेरे को 2-3 स्ट्रीम पे, क्योंकि थंबनेल लगा दो तुम मुंबई वर्सेस आरसीबी खेल रहे हो तुम गेम ही, बट लाइक लोग देखने आते हैं, इट्स क्लिक बेटिंग. बट मेरे को फन उसमें भी नहीं आया. तो मैंने सोचा यार कुछ ऐसा कंटेंट बनाऊंगा, और मतलब आई विल डिस्कस इट ऑफलाइन, डिस्कस करेंगे. बट अब मैं एआई रिलेटेड कंटेंट बनाना चाहता हूँ, बट नॉट ऑन द सेम चैनल, क्योंकि जो जनता भी है वो उन्होंने मेरे को उसके लिए सब्सक्राइब नहीं करा, राइट. तो मैं फन के लिए स्ट्रीमिंग आगे भी करना चाहता हूँ, बट जब मैं वो चीज़ कर लूँ जो मैं करना चाहता हूँ, राइट. जब अगर मैं जैसे गेमिंग सॉरी एआई रिलेटेड कंटेंट जब मैं बनाना शुरू कर दूं, उसके बाद मैं ये भी करना चाहता हूँ कि यार चल मतलब बंदा टच में रहता है, और लाइक साथ में सोशल सर्कल तो है ही, लाइक यू नो मी, 2-3 और जैसे क्रिएटर्स है, सिख पाजी हैं, सिख वॉरियर है, लाइक ही इज आल्सो गुड फ्रेंड नाउ. तो लाइक ऐसा भाई मेरे को बतेरी जनता बोल चुकी है यार कर ले, मतलब आई नो यू डोंट डू इट फॉर वॉचिंग, तो ऐसे ही कर ले फन के लिए. तो I want to do it, but only when like I have friends around. मैं अकेले नहीं करना चाहता, वो कोई मेरे को सेंस नहीं लगता वो करने का. समझा कोई नहीं करते हैं प्लान है मेरे दिमाग में 3-4 आइडियाज. And because Revenant have been pushing out every now and then, they're also very जब बोलो भाई solid, उसके अगले दिन flanking करेंगे. present towards the Bath region. कब That's बताता why हूँ मैं you बस exactly see that wipe फ्री हो जाओ out. फिर मैं बताता हूँ. It is to facilitate the flank hits, so OG would be wary about this one, but they dive right inside. Oh my goodness. भाई लेगा वो Popping off for OG. लेगा Josh वो is finally able भाई to OG ने stop correct stop बोल the दिया. मैं बोल तो रहा हूँ He can't भाई stop ओजी के This man's चांसेस हैं, और अगर already जो so जाएगा close to 40. तो क्लोज जाएगा बहुत. जीत गया And भाई. he just simply does not stop, refusing to give up, refusing to अरे, bend अरे, down. Right to 3v1 है, his, वैसे भी brings him ulti भी है down to उसके his पास. knees, but he's हो already गया. got a fiery grave ahead of him. केजरीवाल में तो 30 करना people परेशान हो गए inflicted, हम and this कर भी round नहीं is रहा. as good as gone. The spike is half जीत gone, गए and बाबू. so is Revenant's hopes हाँ with it. कमबैक किया भाई. OG भाई तगड़ा maintained कमबैक their ब्रो, undefeated एंटी आई streak. ने खोल दिया. They haven't lost a map in split 2 yet. आईजीएल and कौन है? they're not एंटी about to है. do आईजीएल it कौन है? now. एंटी है. एंटी है ना. हाँ. हाँ. What was the Hello? halftime talk after 8-4? And what was the timeout फोन पे बात talk कर रहे हो, मुझसे बात after, I कर think, रहे हो? what, 5-11? That instilled something into the minds of OG, and they did not look back. They did not even drop around after that. They just straight away snatched a game which had Revenant written all over it. And now all they can do is discuss, man. That is all they can do. I mean, what went wrong? How were we not even able to close out the round after a 5-11 lead? All these questions will be posed to the side of Team Revenant. But OG, man, भाई क्या मारा है भाई. leads, great shots. कहाँ and they था? just had ए, that's हाफ the का हुआ least था. of their worries. Yeah, as he's really stepping up. The bottom of shot. To intercept. हाफ हुआ This is a था. very bold plant. 8-4 OG पे. always been successful in a nice spike that's plant, and amazing. Aziz OG, denies 8 the Revenant. round. और उसके बाद 11 पे आके उनका एकदम ऐसे पॉज लगा दिया भाई रेवेनेंट का तो प्रॉपर. OG is made different. रेवेनेंट का नहीं. अरे नहीं, बट रेवेनेंट भी बहुत अच्छी टीम है. लाइक आफ्टर पैराडॉक्स एंड राइट टू एस, फिर वो जो 2 इंपोर्ट करवाए इन्होंने वो बंदे हो गए. ठीक है, वो बहुत ज्यादा वो है. हेलो आ गया. ओके बाकी अगर मैं ओजी की बात करूं भाई, मेहनत है. एंटी ने लाइक एकदम नीचे से टीम बना के यहाँ तक लेके आया एंटी भाई. दैट इज द लाइक प्रॉपर डिफरेंस अगर मैं बात करूं. अच्छा मेरे को एक क्वेश्चन था जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी से, बिकॉज जी. यूर इन द मतलब you're in the game, you know people, and हाँ. like you've seen literally teams performing, right? हाँ
why is it that Indian teams don't perform at the level as like global teams? Like, what is the reason according to you? Global teams. देखो द बेसिक थिंग इज स्क्रिम्स जो होते हैं, ठीक है। आ गए यार पे इतना मैसेज कर दे यार, फोन ना कर, स्ट्रीम करता मैं बार बार। तो हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि जो बेसिकली स्क्रिम्स होते हैं ना हमारी टीम्स के, पहले होते थे अपनी इंडियन टीम्स के साथ ही, लाइक ओजी लाइक ईजी वीएलटी का हो रहा है, ईजी गॉड लाइक का हो रहा है, ठीक है। फिर वीएलटी वर्सेस गॉड लाइक हो रहा है, वीएलटी वर्सेस रेवेनेंट हो रहा है, वीएलटी वर्सेस लीथल हो रहा है। लाइक पहले वो होता था स्टार्टिंग में, फिर इन्होंने जब लाइक एससीए की टीम्स वगैरह भी वो भी देखा कि हाँ वहाँ पे नहीं परफॉर्म कर रहा है, तो उनके साथ भी स्क्रिम्स वगैरह करते थे। बट एक लिमिट होती है ना भाई स्क्रिम्स करने की भी। अभी इनकी भी पिंग 80 आ रही है। मुंबई में मैक्सिमम ऑफ द टाइम बूट कैम्प क्यों बनता है किसी भी टीम का? बिकॉज वहाँ पे सिंगापुर सर्वर पे पिंग कम आती है, सिंगापुर सर्वर की टीम्स के साथ वो स्क्रिम्स करते हैं। बट इन द एंड बात तो वही है ना कि भाई उस लेवल पे स्क्रिम्स नहीं ना कर पा रहे, समझ रहे हो? लाइक अगर स्क्रिम्स कर भी पा रहे हैं तो वो उसी पर्टिकुलर एक क्या बोलते हैं उसको, सेलेक्टेड फ्यू पीपल्स के अंडर ही, मतलब उन्हीं के साथ ही बार बार स्क्रिम्स हो रहे हैं। अभी अगर मैं बात करूँ सपोज इंडिया की टीम का अमेरिका की किसी टीम के साथ ना, सपोज ओजी का बोले, ओजी का पेनल्टी के साथ कोई स्क्रिम वगैरह वगैरह हो अगर ना, तो डिफरेंस पता लगता है ना। अभी हैदराबाद में हुआ था, हैदराबाद में देखा था किसने कितना परफॉर्म किया, ठीक है ना। वहां पे परफॉर्मेंस दिखती थी क्योंकि वो अगेंस्ट दूसरी टीम्स के हुआ था जो बाहर की टीम है, जिनके साथ नॉर्मली स्क्रिम्स नहीं होते रेगुलरली, तो वो एक बहुत सारा डिफरेंस पड़ जाता है। लाइक सपोज अगर मैं नॉर्मल से एक एग्जांपल लूँ कि आप और मैं है, ठीक है, हम दोनों 1v1 कर रहे हैं रोज। अगर कोई तीसरा बंदा जिसको हम जानते नहीं वो आके बोलेगा कि भाई उसके साथ मैं सीधा अपना कंपटीशन रख दूं, स्टार्ट मतलब टूर्नामेंट रख दूं इंस्टेड ऑफ डूइंग स्क्रिम्स विद हिम, तो अनएक्सपेक्टेड रहेगा ना कि वो किस गेम प्लान के साथ खेलेगा, कैसे खेलेगा, शिफ्ट एक 1v1 में शिफ्ट वॉक करेगा, भाग के आएगा, उसका एम कैसा है मेरे को कुछ नहीं ना पता। मेरे को तो सिर्फ इतना पता है कि वो किस कौन से उस स्टाइल के साथ खेलते हैं और क्या खेलते हैं, बट उनका इन गेम क्या गेम प्लान है वो नहीं ना पता मेरे को। तो ये बात तो स्काउट भी बोलता है ना, मतलब आई नो डिफरेंट गेम बट सेम लॉजिक, कि जब तक पबजी वाज ग्लोबल तब तक इन लोगों को एक्सपोजर इतना था, इन लोगों के साथ कंपटीशन इतना था कि लाइक वो लोग वर्ल्ड ग्रेट्स के साथ ग्लोबली स्क्रीम्स होते थे, ग्लोबली इनके टूर्नामेंट्स होते थे, तो इनको भी पता था कि उस टीम का प्ले स्टाइल कैसा सा है, कौन सी अग्रेसिव टीम है, कौन सी कैप करने वाली टीम है, कौन सी थर्ड पार्टी करने वाली टीम है। राइट। अब जब तुम्हें किसी ओपोनेंट का पता ही नहीं होगा तो तुम कैसे चलोगे भाई? राइट ये बात है। राइट। तो मतलब चलो ये तो एक पार्ट हो गया ना। अब फ्रेंचाइज टीम बन गई इंडिया की, राइट? इंडिया की एक फ्रेंचाइज टीम है अब। इंडिया लाइक ग्लोबली वैलोरेंट इज पुटिंग एफर्ट्स की इन टू पुट इंडिया ऑन द मैप। भाई इंडिया का सिर्फ एक स्लॉट है। हाँ मतलब यार अभी एक है ना, तो वही तो मैं पूछ रहा था। मेरा क्वेश्चन वो है कि आज एक है, राइट? इफ एवरीथिंग गोज वेल, मतलब मान लो सब कुछ सही जाता है, तो हम अगले 5 साल बाद इंडिया को पीसी गेमिंग, मैं वैलोरेंट की बात भी नहीं कर रहा हूँ, होपफुली वैलोरेंट तब तक रेलेवेंट है, ठीक है? मतलब कुछ नहीं पता कल को क्या गेम आ जाती है, क्या आ जाता है, बट वैलोरेंट तब भी रेलेवेंट है। व्हाट डू यू थिंक इंडिया इज लाइक, इज इंडिया कंपीटिंग? भाई मैं सिंपल सा बताऊं, एक फंडा जो अभी मैंने नोटिस किया है, नॉट आउट ऑफ एनीथिंग या कुछ भी, जो मैंने नोटिस किया, मेरा जो पर्सनल पर्सपेक्टिव है, ठीक है, उसके हिसाब से जो मैंने नोटिस किया, लाइक आफ्टर द फ्रेंचाइजी टीम्स लोकल वैलोरेंट के टूर्नामेंट्स कम हो गए। ठीक है, पहले ने तो कितने टूर्नामेंट्स होते थे वैलोरेंट के, राइट? वैलोरेंट के टूर्नामेंट्स अभी कम हो गए बिकॉज आफ्टर फ्रेंचाइज अभी क्या है, स्प्लिट वगैरह है, ये सभी उस लेवल पे जाने की कोशिश कर रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट कर सके, राइट? है ना? लेकिन जो लोकली होते थे कि इंडिया की टीम्स बना के, जैसे सपोज छोटे लेवल टीयर 2 टीयर 3 की टीम्स भी आती थी, ठीक है, जिसमें मेरे जैसे कोई प्लेयर होते थे, है ना, उसमें वो भी खेलते थे, वो भी compete करते थे। टीसी ने करवाया था, उससे पहले कितने सारे हुए थे। अभी क्या हो गया, अभी बंद गए, राइट?
अभी उतना लाइक अगर आपको कोई टूर्नामेंट करवाना है यू हैव टू आस्क राइट फॉर द परमिशंस कि डेट क्लैश ना करे, टाइमिंग क्लैश ना करे, है ना, वो सारी चीजें होती हैं। प्लस एक हाँ बूस्ट मिला है, नो डाउट भाई बूस्ट मिला है कि नॉर्मल अगर हम बात करें कि हाँ वैलोरेंट के आने से पीसी गेमिंग को बहुत सारा बूस्ट मिला, जो सीएस गो के टाइम पे मिल जाना चाहिए था, लेकिन ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस सबको पता है कि क्या हुआ था, उसकी वजह से इंडिया के गेमिंग को बहुत एक बैकफायर मिला था गेमिंग इंडिया में। आर यू टॉकिंग अबाउट जो हैकिंग वाला सीन हुआ था? हाँ, उसके बाद बहुत ज्यादा बैकफायर मिला था पीसी अरे एंटी वाज अ पार्ट ऑफ दैट टीम गेमिंग। ब्रो, एंटी वाज अ पार्ट ऑफ दैट आई टीम। नो मैं सबको जानता हूँ भाई, ठीक है वही ठीक है, वो सब पता है हमें, मतलब क्या हुआ था उस टाइम हम भी पूरा फॉलो करते थे, राइट। ठीक है। तो वो चीज होती थी कि उस टाइम पे उस चीज को बहुत बैकफायर मिला था, लाइक दीज गाइस वर एंटी हो गया, राइट वेस हो गया, ये सब जितने भी मतलब अभी के प्लेयर्स हैं, ठीक है, साई भाई हो गए और ये सब जितने भी प्लेयर्स हैं, दे वर लाइक प्रॉपर क्या अनएम्प्लॉयड, राइट because what they were professional gamers at that time, esports players, राइट। but ऐसा चीज हुई है तो कुछ भी नहीं है वहां पे। क्या होता था फिर कैफेज में छोटे मोटे टूर्नामेंट्स जो सीएसगो के इंडिया में होते थे वही खेलते थे वो, कहाँ उनको इंटरनेशनल लेवल का भाई प्लेटफॉर्म मिलना था, कहाँ सब कुछ ही खत्म हो गया। जो बाहर का बंदा आके इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा था वो बंदा भी वापस चला गया, ऊपर से भाई ट्रोल अलग से हो रहे हैं इंडिया के प्लेयर्स, है ना, तो बहुत बैकफायर मिला था। उसके बाद मोबाइल गेमिंग ने वो चीज को बैलेंस किया, बट पीसी गेमिंग कहीं पे मतलब लाइक मोबाइल सबके पास था, एवरीवन कैन एक्सेस मोबाइल, एवरीवन कैन प्ले ऑन देयर मोबाइल, तो मोबाइल को बहुत ज़्यादा बूम मिला, क्योंकि हर किसी के बस का नहीं है पीसी लेना उस टाइम पे, अभी की बात नहीं कर रहा, उस टाइम पे जिस टाइम मोबाइल गेमिंग पुश हुई थी, ठीक है। प्लस उस टाइम पे जियो भी आया था तो सबके पास इंटरनेट था, राइट। ठीक है। तो एवरीवन वाज लाइक हाँ भाई वेले हैं, गेम खेलते हैं, आजा आजा भाई आजा, सब स्क्वाड बना के अपने दोस्तों के साथ लगे हुए हैं, ये सब वेले थे कोविड के टाइम पे भी, गॉट इट। है ना। तो उस टाइम उस चीज़ को बहुत बूस्ट मिला, लेकिन जब बैन हुई तो जब वो मोबाइल गेमर्स ने वैलोरेंट खेला तो लोगों को पता चला अच्छा पीसी में भी गेमिंग होती है, पीसी में भी बहुत सारी गेम्स होती हैं, गॉट इट। क्योंकि हमारा क्या है पहले गेमिंग का माइंडसेट सिर्फ एक पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ पीपल को था कि हाँ गेमिंग भी होती है, गेमिंग में भी करियर बनाया जा सकता है, लेकिन जब जियो आया तो बहुत सारे लोगों को यूट्यूब का और बहुत सारी अलग अलग चीज़ों का पता चला, बट इन द एंड वही है ना कि लाइक वो नॉलेज जो आती है वो लेट आती है, हम अपनी नॉलेज को इतनी जल्दी एक्सपैंड नहीं करते एज कम्पेयर टू अगर मैं बात करूँ फॉरेनर्स या कहीं और भी, बिकॉज वो क्या करते हैं वो नई चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, वी आर लिमिटेड टू आवर माइंडसेट, हम अपना यहाँ इतना ही है, ठीक है। घर वालों ने भी तुम्हें पहले ही डंडा दे रखा होता है घर वालों ने कि भाई पढ़ाई कर ले अच्छे से, पढ़ाई करके अच्छी सी नौकरी कर ले, बस उसके बाद क्या है भाई गो टू बैक कम, मतलब लाइक वर्क होम वर्क होम वर्क होम वर्क होम ही चलता है बेसिकली लाइफ में। हाँ बिल्कुल ब्रो, मतलब दम नहीं होता जब तक किसी को पता ही ना हो। हाँ, और या until and unless you break the rule and you do something yourself, जो अभी के स्टार्टअप्स भी हैं, जो अभी के लिए स्टार्टअप्स भी हैं, हाँ गूदा चाहिए होता है, लेकिन नौकरी छोड़ने के लिए तुम्हारे पास गूदा होना चाहिए, मैं घर वालों को बात कर सकूं, उनको कन्विंस कर सकूं कि भाई मैं जॉब छोड़नी है। हाँ, खुद को बिलीव इज समथिंग एल्स भाई, वी आर इंडियंस, हमारे यहाँ पर हम डिसीजन नहीं लेते हैं, नहीं ले सकते, तुम नहीं ले सकते, यही तो चीज चेंज करनी है कि लाइक यू नीड टू थिंक अबाउट योरसेल्फ, भाई तुम्हारी लाइफ है, तुम डिसीजन लेना है। हाँ नो डाउट घर वाले उस चीज को बोलेंगे कि भाई घर वाले तुम्हारा सही सोचेंगे, उनको ये है कि तुम कहीं आगे फ्यूचर में जाके वो वैसे से उसमें मत हो जाओ, फंस जाओ कहीं पे। हाँ राइट राइट राइट, कि ना ना वो धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। हाँ उनको ये होता है बिकॉज उन्होंने क्या कर रखा है, उन्होंने वही चीज को उसी लाइफ को जी रखा है, दे हैवंट एक्सपेरिमेंट एनीथिंग, भाई कुछ एक्सपेरिमेंट करोगे। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, इवन माय पेरेंट्स सेम जॉब रिटायर होने तक, इवन माय सेम पेरेंट्स जॉब, यार, इवन माय पेरेंट्स, इवन लाइक लिटरली मैं बता रहा हूँ, लाइक आई वाज अभी सच में मैं बात करूँ, हाँ मेरे इतना था कि मेरे फादर वाज वेरी सपोर्टिव, माय पेरेंट्स लाइक माय मदर भी पूरे सपोर्टिव थे, हाँ थोड़ी बहुत गाली वाली पड़ती थी बट ठीक है ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ लिटरली
हमारे जो इंडिया में मैक्सिमम 80 to 90% ऑफ द जो हमारी पॉपुलेशन है, जो हम मेरी एज के, आपकी मेरी एज के बंदे हैं, जितने भी बंदे हैं, या आगे वाला आने वाला फ्यूचर है, ठीक है, मैक्सिमम ऑफ द पीपल या मैक्सिमम ऑफ द गाइज विल लिसन टू देयर पेरेंट्स ओनली. ऑफ कोर्स. एक सेकंड. हेलो. हाँ जी, हाँ जी. मेरे को 3 आया है 50. हाँ 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 हाँ. ओके, ठीक ठीक ठीक. ओके. तो वही सीन है भाई. इन द एंड लाइक आप अपना डिसीजन खुद नहीं ले सकते. कुछ भी करना है तो अपने घर वालों को पहले बोलो कि मम्मी मेरे को ये करना है या पापा मेरे को ये करना है. इवन सेम गोज विद मी. मेरे को जब जॉब छोड़नी थी, मैंने लिटरली लाइक मॉम और मेरी सिस्टर बैठे हैं सामने, तो मैंने बोला मैं बात करने ऐसे क्या हुआ, तो मैं हो गया मेरा, तो किस चीज़ से हो गया, तो मैं अब जॉब नहीं करूँगा. और कहते क्यों, क्या हुआ. मैंने कहा मैं हो चुका है, मेरे को प्लीज़ आप लाइक लिटरली मेरे लिटरली ये टर्म्स थे कि लाइक गिव मी सम टाइम, मेरे को 1-2 साल दो, लेट मी एक्सपेरिमेंट थिंग्स, उसके बाद आप जहाँ जो बोलोगे वो कर लूँगा मैं. ठीक है. तो हाँ, इतना है कि मेरे सपोर्टिव थे घर वाले स्टार्टिंग से लेके अब तक. लाइक जब मैंने पहला पीसी ले रहा था, आई आस्क्ड माय डैड कि भाई मेरे को पीसी चाहिए. हाँ, वो बात अलग है, मैंने पूछा किसी और हिसाब से था कि मेरे को किसी और चीज़ के लिए पीसी चाहिए, बट स्टार्टिंग मैंने गेमिंग कर दी थी. बट हाँ, उनको ये था कि चलो ठीक है, घर पे है, बाहर तो नहीं जा रहा, लाइक ऐसे आवारागर्दी तो नहीं कर रहा, तो हाँ. फिर चलो ये था कि हाँ. बट उनको सर मेरे से एक चीज़ का गुस्सा होता था. वो होता था कि टाइम पे सोया कर, रात रात जागा मत कर, दिन में तो सोता है, रात को जागता है. ये चीज़ मत कर, तू दिन में जो करना है कर, रात में सो जाया कर. भाई ये ना दिक्कत ना, अगेन इट्स जनरेशनल गैप. रात सोने के लिए होती है भाई. तो तुम रात को जागते रहते हो उल्लुओं की तरह, और दिन में तुम सोते रहते हो. ये क्या बात हुई है ना, कोई काम भी नहीं करता. मैंने कहा भाई देखो, सिंपल सी चीज है, आप जो काम मेरे को बोलते हो, ठीक है, आपके घर आने से पहले वो काम हो जाता है, फिर उसमें दिक्कत क्या है. ठीक है, सारे काम हो रहे हैं, फिर मैं चाहे लेट सोऊं चाहे बाद, मतलब लाइक जल्दी सोऊं या लेट सोऊं, इट्स ऑल वो ना कि ठीक है, नहीं ये नहीं है वो नहीं है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, हैपेंस. तो थोड़ा बहुत सुन लेते थे वो. बट इतना था कि लाइक उन्होंने कभी मना नहीं किया. गेमिंग का भी जब मैं पहली बार किसी मतलब लाइक इवेंट के लिए इनवाइट हुआ था, तब भी उन्होंने मेरे को लाइक ही वाज वेरी ऐसे, मैं जैसे ना खुशी खुशी में बता रहा हूँ, कहते अच्छा अच्छा वहाँ पे होता क्या है, ये है वो है. फिर उनको वहाँ पे वीडियो बना के उनको पूरा दिखाया नहीं ये सब. तो ये लाइक हाँ अच्छा है, चलो लगा हुआ है, अच्छी बात है. तो उन्होंने कभी नहीं कहा, उन्होंने मेरे को कभी मना नहीं किया स्ट्रीम के लिए, उन्होंने कभी मेरे को किसी चीज़ के मना नहीं किया. मतलब हम बैठते थे, स्ट्रीम करते थे, दोस्तों के साथ बैठे थे, रात रात भर हंसते रहते थे. ठीक है. तो कभी कभी अगर उठे हुए हैं क्या आधी रात को तुमने वैसे शोर शराबा मचा रखा है, ये वो है. तो कभी कभी होता था, बट इतना नहीं था. लाइक इट वाज ऑल गुड ब्रो. मतलब even though my time in like streaming content creation was like a lot lesser than yours, एक टाइम था, मतलब this was the, because I live in a different city, right? मेरे माँ प्यो रहते हैं दिल्ली, मैं रहता हूँ अभी बैंगलोर. तो मेरे माँ प्यो के लिए ऐसा था कि मैं नौकरी करूंगा, 15 मिनट बात करके उनसे कितना ही बात कर लोगे ना, तुम दूर रहते हो. वो फिर सुनाएंगे खाना खाया नहीं खाया, ये करा नहीं करा. मैं कहता था यार फिर से आपका शुरू. अरे बट आई थिंक स्ट्रीमिंग से ना, जितना मैं स्ट्रीम करता था, मेरे माँ बाप ने जितना मेरे को उससे जाना है ना कि मतलब अपने दोस्तों से कैसे बकवास करता है, कैसे गाल वाल कटता है, ये वो, क्योंकि मैं तो खुला बोलता हूँ ना, मतलब मैं तो लाइक फ्री फ्लोइंग हूँ. तो मेरे माँ बाप, लाइक आई थिंक वन गुड थिंग अपार्ट फ्रॉम ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ एक्सपोजर एंड मीटिंग न्यू पीपल व्हिच केम आउट ऑफ स्ट्रीमिंग वाज माय मॉम डैड गॉट टू नो अ वेरी डिफरेंट साइड ऑफ मी, कि भाई मतलब अच्छा ये ऐसा भी है, ये बकवास भी कर सकता है. तो आई थिंक दैट वाज वेरी डिफरेंट फॉर देम. अच्छा मैप शुरू हो गया फिर से. मैच शुरू हो गया, मैं देख रहा हूं. शुरू हो गया. वही होता है लाइक अगर जैसे आप बोल रहे हो ना कि घर वाले रोज फोन करते थे, रोज बात करते थे, खाना खाया ये नहीं खाया ये नहीं किया, है ना. मैं लिटरली अपने घर से 45 मिनट्स दूर रहता था अपने भाई के साथ, उसके क्वार्टर में, लाइक पीएपी, ठीक है, पुलिस क्वार्टर में.
तो भाई 45 मिनट्स दूर, ज्यादा दूर भी नहीं हो, 45 मिनट्स दूर। एंड सपोज मैंने मम्मी से बात कर ली, पापा से बात नहीं करी, या पापा से बात कर ली, मम्मी से बात नहीं करी, तो एक बंदे का ताना आ जाता था, हाँ भाई भूल गया बस घर वालों को, ठीक है, फोन में नहीं करता तो वहां पे रह के भाई कितना, भाई रोज का है मेरे, 45 मिनट्स दूर, रोज का है मेरे। मैं 45 मिनट्स दूर था, तुम तो फिर दिल्ली बैंगलोर में रहते हो भाई, यहाँ से कितना गाड़ी उठाओ 45 मिनट्स दूर क्वार्टर है, मतलब होशियारपुर से जलंधर, दैट्स इट। अच्छा, वन ऑफ माय वेरी क्लोज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, मतलब नेबर है बट वो रिलेटिव जैसे ही हैं, ही इज आल्सो फ्रॉम होशियारपुर, तो लाइक फॉर ऑल यू मे नो दैट फैमिली, क्योंकि जनरेशन से वहीं के हैं वो, दे लिव इन दिल्ली, तो आई नो इट्स अ वेरी ह्यूज प्लेस, बट ऐसे ही मेरे को होशियारपुर से याद आ मेरे को नाम बता देना, आई माइट सांगा, देयर सरनेम इज SANGHA, सांगा, they don't live there, हो गए उनको तो मुद्दतें हो गई शिफ्ट हुए, हो सकता है उनका अपना टैक्सी स्टैंड है दिल्ली में, अगर लाइक दैट इज ऑफ एनी हेल्प, नहीं ऐसा and the कुछ bड़ी नहीं है। alongside the rest of his teammates, and they're here now. Blackhawk and Jing making it look so easy. बट आना यार मेरे को पंजाब, मतलब द ओनली पार्ट ऑफ पंजाब आई हैव सीन इज लाइक द कमर्शियल सिटीज, लाइक चंडीगढ़ हो गया, फिर आपका लाइक ये पिंजौर साइड हो गया, लाइक यही एरियाज देखे हैं मैंने, मतलब आई हैव टू अच्छा तुम सी लाइक मोगा एंड लाइक प्रॉपर लाइक उस साइड नहीं आए ना, प्रॉपर हिमाचल वाली साइड या थोड़ा अंदर की साइड नहीं आए हो पंजाब के? नहीं, मतलब मैंने लाइक ब्रो लाइक कोई फैमिली नहीं है उस साइड, मतलब माय पेरेंट्स लाइक वी आर लाइक प्रॉपर पंजाबी, राइट, मतलब मेरी एक साइड तो मुन्नी है, मतलब इतने पंजाबी हूं मैं तो, बट लाइक वो सारे दे वर ऑल लाइक माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान पार्ट ऑफ पंजाब, समझा तो रावलपिंडी हो गया, पिशोर हो गया, लाइक तो दैट इज वेयर आई एम फ्रॉम, बट हाँ मतलब आई हैव टू सी पंजाब, लाइक हाउ डू, मतलब मैंने आई हैव सीन दिस लाइक अगेन, लाइक बहुत ही अलग अलग टॉपिक पे बात हो रही है, गेम चल रहा है, तो बता देना अगर मेरे को बीच में काटना हो तो, बट आई वुड से कि मतलब Punjabis in Delhi are not really Punjabis, they're a version of Punjabis, मतलब they're not like there is a huge difference between both. हाँ मतलब मैं यार मेरा एक फ्लैटमेट फिरोजपुर से था यार, मेरे को पता चल गया, 4 साल रहा है मेरे साथ, तो मेरे को वो ऑलरेडी पता चल चुका है, मतलब मैं दिल्ली में रह के मेरे को इतनी पंजाबी नहीं आती थी, मैं अपनी दादी से बात कर लेता था, मेरे घर पे टिपिकली हिंदी पंजाबी में भी बात होती है, बट लाइक ठेठ पंजाबी बोलनी सीखनी बहुत डिफरेंट है, मतलब अभी भाई मैं पंजाबी में बात करता था कि मतलब मेरा दोस्त है हरमन, वो ये कहता था मैं ये कौन सी पंजाबी है, बहुत फर्क है भाई पंजाब लाइक वही they kind of anticipated it, so there was an Astra start in the way with both the players just भाई तो खोल दिया भाई इन लोगों ने, the opera पूरा खोलेंगे अभी, रुको तो सही, and अभी तो शुरुआत हुई है, 2-1 तो है, instantly killed. I'm not even sure if नहीं बट वही है ना, कम बैक आई थिंक लाइक दे आर टेकिंग देयर टाइम, बट OG इज लाइक कमिंग बैक वेरी स्ट्रांग, OG is very strong actually because एनिग्मा में इनकी बहुत ज्यादा, मतलब वही तो बोल रहा हूँ, एंटीडोट है बिल्ड दिस टीम फ्रॉम द बॉटम, कुछ नहीं से एकदम उस लेवल तक लेके गए हैं, these guys are mirroring each other, man. और अभी अगर मैं बात करूँ आरबी के टेसरेक्ट एंटीडोट एंड रॉक्सी, इन चारों की लाइक अगर मैं बोलूँ तो क्या बोलते हैं उसको, बॉन्डिंग सिनर्जी बोल रहा हूँ, हाँ सिनर्जी इज वेरी गुड, वो तो है ही ब्रो, मतलब इफ यू हैव बीन विद द सेम पीपल, लाइक यू नो देयर प्लेज, यू नो देयर स्ट्रैट्स, उनकी कॉम्स, एंड एंटी इज आल्सो अगर मैं एंटी की बात करूँ, एंटी इज अ वेरी गुड आईक्यू outside B may could be a positive. I've seen him playing, I've seen him practicing. Next level. They are preparing for this regroup outside A and this A hit overall. भाई केजे लेके बंदा ऑफ कर सकता है, और क्या चाहिए तुम्हें बताओ मेरे को हेवन मैप पे, सिंपल, अभी भी ऑफ है उसके पास, अभी भी ऑफ है उसके पास, what a dangerous game for हाँ जी all the players of Revenant. हाँ जी Jesus, they got crunched hard. No way to fight back, no way to survive. What is this? OG are hunting them down. They don't need to fight so aggressively, but they just make it look absolutely flawless. OG moving fearlessly across the battlefield, even into positions they don't need really.
They had money, ग्लोबल so टीम why के not? बंदे स्टार्टिंग से क्लियर Just होते why हैं not? क्या They- करना है उनको That's not an excuse to take unnecessary उनके risks. पास अब Hey, resources a नहीं 2v5 is never an unnecessary risk. भाई निखिल भाई सिंपल सी चीज है यार got the round in your control and वहाँ पे players. Just go ahead and माइंडसेट fight है the लोगों facts. का वो छोटे That's- होते लाइक उनको सबको सपोर्ट करते हैं वो That's what हेलो OG does. They're so aggressive. हाँ They जी want भाई। all the frags in the हाँ जी round. भाई। They're not satisfied with just 3. And they push their spawn. Is what they do to get the round overall. And Revenant, they could have possibly saved 2 rifles if they just hightailed it back towards maybe their spawn, maybe towards the C side. But they do not, and now are just left with sheriffs all about. Josh is playing on the knife, so he does not invest into a sheriff of his own. But yeah, Revenant, they have very little chance of getting something done in the round now. And even OG are being super careful. They know that Revenant likes stacking these sites and taking some risks in eco, so they're gonna take their sweet time to clear everything out. Trailblazers, drone, everything being used to methodically clear a lobby, long and short respectively, but now Rothfield goes inside. He knows that the nebula in the way means there could be somebody inside, so he goes all the way across Graffiti to circle Ching and at the same time somehow get the kill onto Ace as well, but he's been staying alive much longer than expected inside that smoke. Uh-oh, Josh overstays his welcome and he still gets that shot off! Oh my goodness, that is just unbelievable. It all started really well for OG, but now it's going all the way down into the depths of chaos. Revenant Esports clutched this round out from the palms of OG. And it all happened because somehow, even after seeing the Trailblazer did spot Ching there, फ्लैश भाई क्या हाल है even वीसी आओ after that happened, मेरे वीसी somehow आओ Ching was able to get 2 or maybe even 3. I don't exactly remember the number, but he at least got 2 in the round. फ्लैश भाई मेरे वीसी आ जाओ One आज with the पार्टी Sheriff and ओपन then with वीसी the है one with the Vandal in sight. Oh, there was a big gap left, a shot, and that is what bit the players of Team Orangutan in the back. Yeah, and those flanks have been coming through all the time, right? OG, they take control of long first. As soon as the Jets dash inside, that's when the rest of OG start climbing up the second ramp. And then they flood the site. And that's exactly why Revenant is placing that smoke. It's quite standard to place it in between the default and the short box. The way Neck and neck inside over there, that is quite common. But I shot मारा है today. And now with the op once मैं again, यही they've चीज बोल handed it रहा to था the भाई वो captain. बंदा केजे लेके You केजे often में ऑफ कर expected it सकता in है the वो hands कुछ of नहीं Josh, but है Antidote 2 is quite a strong offer. Yeah, मेरी पीछे चल रही है Presence to it, see, and while he's getting all the kills Out over to X there, कर लो। Rothfield has already snuck up a कभी हो जाती है right to Ace, had no Because idea your he would be there stream so quick. जो मैं देख रहा था obviously Rounds पीछे चलेगी ना वो। The round's over and Revenant. I mean, they can try and get into the side with Paradox and Rolling Thunder. But once that, you have Seekers of Aziz, you have the Hunters fully available for Tesseract. So, Revenant, yes, they'll still go for this retake. Let's see if they're able to do something about it or not. Paradox has full belt of util too, so he can throw those flashes to help his team get into the side. OG, there is a crossfire under Revenant Graffiti, which will be broken by because of this the Rolling Thunder. But the players have got enough time. The Mollies will tag out the players of Revenant, but they jump in and get all the frags needed. Blackhawk sticking the spike. Anti cannot do anything about it. He just had that operator in hand. The spike will be stuck and Revenant get them the score. Why do you think Twitch didn't work out in India? Oh my god. What a broad. राउंड आ रहा लेकिन ऑफ दिख रहा है भाई हाँ अब बोलो क्या ट्विच डिडंट वर्क इन इंडिया भाई Viewership नहीं है या like yeah, Twitch that did a round shitty it- job in it shouldn't have acquiring gone down the way Indian it did. जनता. नहीं कर पाएगी ट्विच भाई पता ही नहीं है लोगों को I तुम thought लाइक OG was मैं सिंपल सी well चीज set बोलता हूँ लाइक रैंडमली यू आर इन बैंगलोर राइट to be thrown in because I think about 3 रैंडमली players किसी got मॉल में focused. जाना है ना आस्क पीपल डू यू नो One of ट्विच them डू यू नो व्हाट इज ट्विच was Tesseract with the ultimate available. ठीक so है he shouldn't just decide as आई to what बेट to find out. 50% बंदों को पता होगा बैंगलोर में 50 को नहीं Once पता again, होगा these little यही चीज अगर मैं mistakes, दिल्ली में बात करूँ OG caused them वही the round. परसेंटेज चेंज हो जाती है आपकी वो परसेंटेज आपकी हो जाती है This running around is able to get a headshot on 60-40 नहीं 70 कर लो 70-30 कर लो ठीक है एंड अगर वही चीज तुम पंजाब में पूछोगे वहां पे कोई भी तो tier 2 उसको city 30 पूछ लो कुछ नहीं होगा कोई भी tier 2 city पूछ लो सिटी की मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ सिटी भी छोड़ दो स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं सीधी पंजाब में पूछोगे पंजाब में मैं सीधे सीधे बोलता हूँ 30-70 का रेशो है 30% बंदों को 30-20% बंदों को पता होगा ट्विच क्या चीज़ है वो भी नई जनरेशन को
30-35 But I या think- 30-35 या Just runs 40 की away. एज वाले कई बंदों I को mean, पता ही it नहीं would होगा be great ट्विच if you होता can क्या है. retrieve one gun somehow from a lobby, but But even जैसे that's अभी not possible recently I because saw RPK is Raka was marketed. streaming on Twitch and Bro, उसको because like उसकी- Raka की अपनी following I है. understand उसकी that फॉलोइंग movement देखो ना of कितनी है. He recognizing has 4 to 5 patterns. I understand कितना they're है not 4-5 quite, lakhs but- सब्सक्राइबर्स हैं उसके, ठीक है. हाँ, I think उसमें there से are हाँ, some 4.5 ways to लाख do है it, and उसको right? like मैं वही बताता हूँ ना तो like I'll just give you numbers क्योंकि मैंने अभी recently देखा था and I'm always curious about technology की कैसे use हो रही है. हेलो नचिकेता भाई, तो सत श्री फंडा ये था अकाल. कि जैसे राका को 2.5 लाख व्यूज आते हैं, हाँ. ठीक है, on his streams जो कि YouTube पे होती है, वही सेम उसको on his best day, हाँ. ठीक है, हाँ. he got I think 24,000 views, which is also a lot for an Indian creator. ट्विच पे ना. वही है ना कि और अगले दिन that 24-28,000 became 8,000 like एक दिन में. वो पहला दिन का फैड होता है ना कि भाई हमारा भाई यहाँ कर रहा है, चलो सपोर्ट करते हैं. उसका यही था कि घूम फिर के भाई ने यही This आना is है. what happens in other streaming platform also. मैं नाम नहीं लूंगा बट मैं नॉर्मली बोलता हूँ. This is हाँ, what हाँ, happens in उसका- other streaming platform. उसका क्यों logo देखो दिख रहा है, उसका logo जितनी दिख रहा है. लोगो दिखे ना दिखे कितने बहुत सारे स्ट्रीमिंग एक नहीं है, बहुत सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं अभी इंडिया में रिसेंटली अगर मैं बात करूँ. बट मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ. लाइक इफ वी टॉक अबाउट फैक्ट्स, सिंपली होता क्या है कि जो आपके सपोज अगर मेरे 2000 सब्सक्राइबर, look at how quickly Josh has मैं come down. अपने पे एग्जांपल लेता हूँ, मैं किसी की बात Let us नहीं get a करता. util in the तो way, so मेरे भी 4000 push सब्सक्राइबर है, back. ठीक है. तो वो What do you see? 4000 Not expecting में this? वो 4000 में And there you go. ठीक है. It's not Josh. at उस least he 4000 can में pull it बहुत off. सिंपल सा He फंडा was है still looking around, कि so भाई he sent the 4000 trail में to से figure it out, and this would be Josh's सिर्फ clue 10% to लोग get out आएंगे, dodge. वो भी शॉर्ट ही नहीं है. 2 to 10% मैं रेशो लेके चलता हूँ कि भाई मेरे 4000 में से बंदे मेरे को किसी और प्लेटफॉर्म पे देखने हैं. वो भी जो सिर्फ मेरे को देखना है. सारे बंदे 4000 के 4000 तो नहीं आएगा. एंड सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट अगर आप जैसे राका की एग्जांपल ले लेते हैं, उनकी एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है. ही हैज 4.5 राइट, 4.5 लाख सब्सक्राइबर्स. तो उसी की अगर आप बात करो तो सेम नंबर्स का गेम है ना भाई. कहाँ 2.5 लाख, कहाँ 24,000, 10% हो गया. in this round and Revenant, yeah, they'll be happy to सिंपल है. dispose 2.5 the लाख players एंड now. 24,000 25,000, 10% हो भाई गया ना. भाई Slow Bro, creep तो from मतलब- Revenant. वही 8,000 कर लो, Okay, वही that's 8,000 what बाद में we आप hope बोलते हो, he would तो be वही able to चीज हो गई ना. 2 to 10% की रेशो परसेंटेज भी तो चल रहा है काम. वो तो है ही. मैं बस ये कह रहा था कि What? think No about it way. this He's way, still right? able कि to get मतलब that kill. even I am though a new it's creator, fast. ठीक है, That's just nuts. and Does he instead of expect the YouTube second I one? choose No, he doesn't. Well, A B not C a platforms. at least लिटरली Revenant 2-3 ही can run हैं with जो it. कि alternatives हैं हाँ, इंडिया That they में. do. नाम नहीं लेते, हाँ. पता ही है ना सबको क्या क्या हैं. हाँ, हाँ, Although आगे. it's So, great, but Can if they take and this is 50 just kilos coming off out of these, जितना people like now देखा हो. will- एक सेकंड देना कॉल. Can anyone एक grow सेकंड on an देना. alternative Sorry, platform? एक सेकंड कॉल आ रहा है. 4 more rounds कोई नहीं, of कोई नहीं. emoji need to play in the regulation. हाँ जी. Money shouldn't be their हाँ जी, हाँ problem now. Even if they lose 3 rounds straight, they will have enough to purchase in the 4th round too. So money should be the least of their concerns for OG. It is a timeout being called out from Team Revenant, and let's see the adjustment. For now, they are just happy fighting for A short, A main. And OG as well, I mean, they haven't shown us a lot of map being explored on their side too. I mean, this is one of the very least C hits we've seen in this entire half. B side is yet untouched. They only tried it once in the pistol round and failed. After that, it has been again and again those A hits which have helped OG get the 4 rounds for themselves on the board. And OG also have been fighting Revenant tooth for tooth. I mean, yes, it is true that Revenant Esports are playing very aggressively, and OG are always able to handle that aggression with the defaults that they have. But every now and then, whenever they get the first pick, OG don't mind turning up the pace. Then they don't mind dropping their defaults out early and transitioning into an execute-based setup. And the pace Hello, that Ishak. Revenant were What's flanking up? them in bind, that is just simply not present. in the game. It's BRB just not पाजी there कॉल. at all. ओके डन कोई सीन नहीं है. आ जाओ. फ्लैश भाई भी आ जाएंगे तब. Let's see though. फिर फ्लैश भाई के भी Just when there's a bot, लेते there's हैं. still an alarm bot out B main, but no one's marking garage this time around. That's Yo, let's that's go. an Which interesting team are you change. supporting, Ishak? I think it'll be the job of Blackhawk to do it. भाई एक को मारेगा Josh जॉश is positioned with his operator. मेरे हिसाब से. He should be cleared away right away by a Tesseract out road. But Tesseract is testing his luck a little bit, just trying to give the shoulder out to the player on the C side. And this is going to be a drone C split. And OG are ready with all the util they'll need. Dog gets spotted down. The Trailblazer will give some information, but Blackhawk is Unlucky the first loss. one to get a frag.
Raw fuel. Nice four spam bada RVK. wicket trades. And you can hit the brakes right now. Nah, but I don't think OG's gonna do that. They're already peeking Color, out of the color, smokes. color. Tesseract swings Nice. out wide. Ace is good for only one, and eventually OG will overwhelm them. But the plant is yet to go down. They can slow the round in its tracks if they place the lockdown. bye. That will return the favor. Arados wants to make a play before the lockdown gets popped, and he pops off RVK's head. Tesseract has a tiny corner for himself. Oh, But Paradox this gone. is just so funny to look at. Are we gonna see a knife? Absolutely we are. Oh no! All right, Tesseract, you gentlemen. ले जाएगी भाई OG ले जाएगी. Knifing him makes him a gentleman, huh? 2-0. All right. That Healing is a area. gesture of goodwill. Healing He area doesn't 2-0 ले involve जाएगी bad OG. manners. Okay. That's Okay. nice. Give him a chance again and एक और है भाई, दो नहीं है, एक और है. He'll definitely knife if he sees एक a छोटा सा retained क्या threat the बोलते next हैं time उसको? around and has और enough है. time. I think time I was don't the think only Paradox is gonna give him another opportunity to get detained. Antidote gives a miniature action figure They of won't the have enough flash rounds आधा in लेके this जाना round है. to get, सिर्फ flash get नहीं है भाई, Antidote. 3 है Until total he just, antidote के aces miniature. and gets the plan too. But right अरे, now, अरे, अरे. Josh, he did find the Josh, perfect मेरे वाली timing. jet खेल लिया He आपने तो had भाई. the perfect play in mind. He was almost able to get No one, but way. he just runs into right to ace. But Ching is still fighting a shot. Now remember the round that Revenant took away from the hands of Team OG. It was again that A-shot player who made a lot of impact, and once again Ching is trying to do so. He gets the second two. And now falling back, तीनों यही है भाई, Revenant, rotate they कर जाओ answer ना. back, even though in their eco and even though they lost the early few frags, they still have the man advantage once the round begins. वो short से आ रहे हैं या long They're से जा still रहे हैं. climbing up a shot. Revenant would have assumed that after the turret was broken, they would try to fall back or something. But Revenant are making their presence known towards long, and at least they're playing all together. So OG have the opportunity to trade them out. The Phantom strikes, but the bigger gun is right here. No, OG का round Paradox. है. He pulls it out at the worst बस possible raw fuel ना time. मरे. And Blackhawk still in the right place, still at the बोला right था. time, but raw fuel is just so I can much do guys, faster. you will make sure to hit the OG sub with a button 2v3 also. clutch. I mean, don't get me wrong, they started off this round really well. They dealt with the ultimates from Revenant really quickly. Revenant The का attack Bladestorm देखना है on भाई. Josh, it didn't have much impact. And look at that, Aziz was even distracted in that moment. He was shooting down the recon dart, so Josh was perfectly positioned to kill Aziz and then dash back. But the opportunity's gone. That's still fine. Ace uses the Hunter's Fury to somehow make up for Josh's lack of a kill over there, and instantly get dashed upon by raw fuel. So before he can put the bow away, he's dead. Jing, yes, he did make it look hopeful, but no, this is not happening. Even with the bigger gun, he's not able to do anything. And now they have to go up against Josh's massive gun. Antidote has one to respond with of his own. But the drone will most likely clear him out. So if Aziz can break it, it would be perfect. But Josh is still positioned perfectly. Revenant this time around again. Test time ही पकड़ के अंदर घुस गया भाई. Blackhawk को नहीं पता. So he cannot be taken out from B main, and now Para ready with the aftershock, wants to flash off Tess off the angle. But Tess, अरे he was playing unlucky beautifully यार. with the footwork, but when it came to aim, he made a lot of shots, and Unlucky, Revenant, unlucky. they answer right back with a flawless. Both these teams fighting tooth and nail. This is such an interesting game. As Revenant Timing Esports, पकड़ी तो they रूथी make उसने लेकिन. similar plays. They want to play aggressively once again, but this time with just a little bit from the sights rather than actually peeking deep into sewers and long. And with that, Josh is able to get all the opening kills he needs. Even Ace chimes, okay, not Ace, his teammates on the Ace side, they both chime in. Ooh, there is a timeout being called by OG, and they, I think, want a 7-5 half. That's the reason probably, and I still do not understand. भाई मेरे को इसका नाम भूल गया Revenant की कोच का. Side when they're not इसका तो मेरे को faced, पता है when डॉक्टर है. they're being struck down in इसका मैं नाम multiple भूल गया, इसका क्या instances by नाम. Revenant. This time around, it all started once Ching got a frag out garage. So you cannot completely call it a hit, but essentially majority of the players are being thrown out A lobby by OG. Correct me if I'm wrong, but OG haven't planted on B yet, have they? Not at all.
Not at all, right? I mean, they sometimes fight mid and fight grass every now and then, but they haven't really planted towards the B site. Whenever they take C long and garage control. They try to go for the crunches. That's all normal, but they haven't actually exploited B as much as I thought they would. It comes to us as a surprise, but I think OG are sort of maybe preparing for the next stages in games like these, because they've already almost confirmed their qualification. So yeah, that could be one of the reasons they're just rehearsing their A hits again and again. That's the Treat worst this excuse whole I game could like come a up with. scrim. I mean, yeah, they But don't have yeah. anything to lose, but Revenant do have a lot to prove, so the stakes are still high for them. And this time around, they do have the Rolling Thunder for Paradox and क्या even the hold Cosmic भाई? Divide, so they leave A. मेरे से तो They इतना hold take कभी नहीं on हुआ. A, and OG stubborn enough to go towards that side again. Tesseract has the Hunter's Fury, and AVK has a Cosmic Divide for himself. But I कभी भी think नहीं हुआ इतना AVK hold. will use it to help his team enter rather than saving it for the post plant. मैंने तो जब भी Maybe, होल्ड किया ना just लास्ट के maybe 30 just सेकंड put में it रश back. करते हैं और मरते हैं. Okay, no, yeah. Of Maximum course, of the Rafi time. has A-long control. मेरे You साथ तो already ये have होता है. some bit of information on A shot, so you still execute onto the side. Yeah, Revenant Harry K can are use happy the to ult. give it. Okay, It's then. weird art. This is the weird ult, right? It makes it look like they're hitting C. The ult actually cuts off OG's own path into the site. But they still go through it. And that's exactly why Revenant, they were hesitating. What's going on? Oh, and right to Ace gets done dirty as soon as he pops the ओ drone. Rocky भाई pops his बुरा head. लगा भाई बुरा लगा भाई. There is still the Rolling Thunder on Paradox, and OG are expecting this one. That's why very few of them are playing from the side itself. And as soon as the ult goes in, the Hunter's Fury is activated to make sure they can't pop out of CT, but Josh jumps out of heaven, and he takes down Rockfuel's head. Antidote, blind as a bat, and Revenant are rolling them over. And now RBK's ult, it's backfiring now. This is the second ult placed from the other Astra, but it's very similar to one that RBK placed. Is he a master of playing through these walls, playing through the gaps, just jiggling in and out? Shing says no. ट्राई अच्छा करा था उसने. Revenant, even though they lost that initial duel and the player just got taken, right to edge just got his head taken off, still are able to mount a really good strike back into the side, and they're able to retake it properly. I mean, I was surprised for a moment. The Rolling Thunder even got dodged by Rafuel, so Rafuel had a very good opportunity, but the flash was just perfect. The jump down then comes in, and the Hunter's Fury, I think, came in a little bit. भाई too ऐसे माइक early. जैसे That was, I think, supposed to टिप्स stop ने the लगा push रखा है ऐसे coming in माइक from तुम्हारे पास CT 2-3 maybe, पड़े घर पे. not for the post plan situation, but it could have been saved. I mean, you should have expected that the Cosmic Divide from the counter team is going to come in, and then you'll be left with nothing in sight. So Yeah. it was a hasty decision made in the heat of the moment, which led to team OG dropping another round. But Revenant, they'll be happy with the 6-6 half. I don't think the Hunter's Fury was as big of a problem, but yeah, the Cosmic Divide being put in does kind of put you in that situation, right? If OG are deliberately not playing from the side itself in hopes of dodging, I guess the half हुआ Rolling ना, Thunder, 6-6 half they हुआ should ना. have expected the Cosmic Divide to cut them off as well. And yeah, the Hunter's Fury at that point, the 6-6 half हुआ 6-6 half हुआ. result from the other Astra, that's when you realize what it actually leads to. ये क्या हुआ? That was still a good half, so we'll jump into the second one. after this 6-6 short half हो गया. Hit for my wins, I need my eggs. This life is real, can't play pretend. Came off the bench, I get it in. मेरे को भी ना सारे टीम से जर्सी लेनी पड़ेगी भाई, मुझे लग रहा है. जिस टीम को सपोर्ट कर रहे हो उस टीम की जर्सी पहन के बैठना. Bro, fridge meat के लिए, heat के लिए नहीं. Bro, this graphics card is making my frames drop. Come with me if you want a game. The all-new OMEN 16 with advanced भाई tempest इसी cooling लैपटॉप के लॉन्च technology, now with 5 heat pipes गए and थे, 4 हाँ. thermal outlets. The OMEN 16 with 12th Gen Intel Core i7 processor to make you forget your frame drops. Now that's cool. Game on with tempest cooling. बेस्ट कूलिंग. इसके लॉन्च इवेंट में है. Presenting Hyundai i20 N line. It's भाई time जो to ग्लोबल play. मार्केट में ऑनलाइन है ना वो बहुत डिफरेंट है इंडिया I guess I'm a Gen Z, चेक or should I say, the Gen Next.
And I don't let fear hold me back from doing anything. I choose to move fearlessly through it all. Hey buddy, we need you to trim your beard for this next scene. What? Okay, fine, I'll admit it. Oh bhai. Let's get back into the second Bam half. से King को damage बढ़ा. Revenant versus OG. Both teams are tied evenly. Even though OG have the first map win, Josh wants to get a head start, but gets his head blown off by Aziz. They can't go for the plant yet because of the gravity well, and Ace is stuck over here, but at least he's able to alleviate the pressure by killing Raw Fuel. Even Aziz is down, even though he started off with a brilliant double kill. Blackhawk and Ching are stabilizing, and they expect Tesseract's flank too. It's all gone down perfectly. Spike planted. Except for the entries, the trades are just perfect. Or I say OG just gave them 1v1s. And RVK, मुश्किल है यार, he will 22 also HP. be offered a 1v1 against right 2 ace, wins it out, but with अगर 22 HP, उसको एक्स्ट्रा को मार के डिफ्यूज पे बैठेगा टरक से मर जाएगा. has a lot of HP to play with. Blackhawk, the first one to contact maybe just by ching a little bit more seconds on the clock. He is in astral form. अरे नहीं. Oh, and RVK just misses quite a few shots too. So yeah, that is a Revenant round. But OG, just I'd say schoolboy mistakes just happened. All the 1v1s were given away without any util being thrown in, and they lose all the duels. Revenant win the round. Revenant with some really clean head pops over there. I was a bit concerned, especially when Aziz started to pop off over there. But Revenant, they came back really sharply. Now with the better weapons, they can hope to use these bulldogs at range. You still have to be careful against the sheriffs. इधर भी नहीं है, इधर स्काई है. One does reveal his वो position. की टीम में स्काई है, उधर ब्रीच है. Luckily, he doesn't get caught in the gravity well. Otherwise, he wouldn't have been able to escape either. Tesseract and Aziz both just focusing towards short now, rather. A smoke over here would be perfect. मैंने देखा आजकल स्पेक्टर का जमाना गया भाई. That would make them. That would make it harder for Revenant to clear all the site. And this is a hit, and OG are positioned perfectly to stop it down, but they need to hit those shots. And RVK gets one, but the trades are immaculate. The trades are just immaculate, and inside Anti was all alone, gets picked off, gets taken care of, and Revenant. ठीक है, decent था इको भी. दो बंदे मारे हैं. They were able to finally control it and get the round for themselves. They get the round, they keep the Bulldogs, all three of them intact, and now they have to face against the big guns. Audience कहती है 52% Revenant जीतेगी, 47% OG जीतेगी. The extra few $100 are not worth it. कितनी वोट सही हैं? 53%. Back with the Guardian. Okay, then this guy's just basically throwing us off now. He's just like, screw you, Crips. I'm not gonna let you talk about the buy at all. Focus on the games instead. Focus on the frags. Which I would be happy to do if they oblige, and they definitely are doing so. Rockfuel trying to hold them back. There's a lot of util being dumped at him. The Aftershock and the Nano Swarms. They still don't push him off his position. But within all that distraction, Tesseract has found his place over here. The problem here is the weapon class, and he gets nothing. The Guardian, it is a one-tap weapon, so you really cannot expect much from that situation. Especially when all five are peeking you. Yeah, exactly. A Vandal could have still gotten one, but that does not happen. And Para has been tagged up quite a bit, and they do not have a Sky to get the reset back. But yeah, Revenant, they are clearing corners. They do not spot RVK in the corner too, and Aziz is there as well. RVK gets another, and then the third kill. Bye. Make it 4 because OG are here to contest. OG are here to stay. They get their 7th in quite a good fashion. Aziz finally finding his form. He was having a quiet game in Haven, even though he popped the hell off in Bind. In the first half of Haven, he was somewhat quiet, and now he's waking up. And especially when all of them are peeking him from the same left side of the smoke, that too with quite a lot of gap in between the trades, he's able to devour them. चलो बाय राउंड अभी दोनों टीम का ये राउंड बहुत He was क्रूशियल an है. absolutely unstoppable monster, but we know how good Aziz can be when he's anchoring with the sky. Rockfuel dashes ahead with intent, and now that he knows that nobody's present because of the recon dot as well, he's very happy to fall back as well. But while Rockfuel falls back, Aziz has pushed up. The re-smoke A mid is just beautiful. It is just beautiful because that completely takes away the trade potential from Paradox. And
Revenant are now being toyed in this round. The Seekers being thrown in. जी, हाँ जी। Still remains क्या चल रहा है score? 8-7? हाँ जी, 8-7. अच्छा, Ishaq is one of my for Team Revenant. They are community trying member. Oh, nice. get their forces back Good to see him here. on a single place, and that would be the B side, I think. The alarm bot will Ishaq give you like an वाइक early करा नहीं करा अब indication तक? शर्म नहीं आती तेरे को अगर नहीं करा and तो? Aziz is ready to peek off of it. Maybe a flash to help him do so. But no, he dry peeks and Ching will क्या take लगता है his कौन head लेगा off. ये मैप? ओजी So Revenant, they do find an entry. देखो मेरे को ऐसा Yes, क्यों लग they'll रहा है go आप on XP, सीक्रेटली but at ओजी least they को get the ऐसे spike अंधा down. सपोर्ट कर रहे हो बिकॉज ऑफ द फ्रेंड्स. कह सकते हो kind of. नहीं ऐसा नहीं है भाई, Revenant में friends नहीं है, no paradox. ठीक है, all the way around and and lack of let's try to anticipate this. ऐसा कोई सच नहीं है. But हाँ, like I have spent time with Still a little NT careful, of still poised, and Tesseract has dealt with the flankers. You even Now went the to rest of the boot camp trap, ना? the I back remember camp, you. Paradox is using his flashes, right. hoping तो to buy अलग ही some बॉन्डिंग space for होती है Blackhawk, but he gets साथ popped by रहना खाना Tesseract in the पीना. back of his head. OG are लाइक able किसी to से अलग से successfully मिलना retake. वर्सेस साथ बैठना उठना. वो भी फिर उसके बाद इवेंट्स पे भी मिलना, इवेंट्स पे भी साथ में टाइम स्पेंड करना, तो इसलिए भाई मैं अगले महीने पूरे महीने दिल्ली हूँ, आ जाओ कभी भी. मिल लेते हैं नेक्स्ट मंथ. मैं भी आ रहा हूँ भाई दिल्ली. मैं संडे को निकल रहा हूँ एंड आई एम देयर टिल 11 जून. हाँ नेक्स्ट मंथ तो मैं भी प्लान कर रहा हूँ. अभी तो नहीं कर रहा था क्योंकि 21 को मेरे इधर फ्रेंड के कुछ फंक्शन है, उधर जाना है. एंड उसके बाद नेक्स्ट मंथ तो मैं वैसे भी आ रहा हूँ. लाइक वन ऑफ माय पार्टनर इज रिसीविंग हिज मर्सिडीज. अरे नाइस. उसकी डिलीवरी है तो यार आ जाओ ब्रो, कभी भी आ जाओ. घर रुकना आराम से. कोई सीन ही नहीं भाई. अपना घर है यार, अपना घर है ब्रो. अरे भाई वो सीन ही नहीं है. दिल्ली में आई हैव अ लॉट ऑफ रिलेटिव्स यू नो. अच्छा अच्छा कोई नहीं. किस साइड है दिल्ली में? किस साइड है? पूरी दिल्ली में फैले हुए हैं. अच्छा अगर कोई लाजपत नगर के आसपास हो तो कभी भी आ जाओ यार. हाँ कोई सीन नहीं है. नहीं भी दिल्ली है कितना बड़ा ब्रो, छोटा सा तो है. वो तो है. कोई नहीं, डेफिनेटली यार. डन ब्रो. Anticipation. यही कंटेंट बनाएंगे, लोगों से जाके पूछ के आएंगे कि इसको ट्विच पता है. हाँ बना लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं. और भी बना लेंगे. ट्विच के रिगार्डिंग की क्यों बना. हाँ मैं तो सारा गियर लेके आ रहा हूँ अपना, वायरलेस माइक वगैरह सब कुछ पड़ा. हाँ वो तो मेरे पास भी पड़ा है ब्रो. मतलब मैं कल हिसाब लगा रहा था, मेरे स्ट्रीम पे बोलना नहीं चाहिए मतलब, पर मैं 6 के करीब खर्च कर चुका हूँ. तभी तो कह रहा हूँ, तभी तो खुले में बोल दिया मैंने. लाइक आई हैव प्रॉपर वायरलेस माइक्स वाला सिस्टम तो है ही है, प्लस आपका अपना वो गिम्बल वगैरह भी है, फोन गिम्बल. ठीक है. फिर अलग से एक माइक के ऊपर जो अपना ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर जो माइक लगता है यूएसबी के थ्रू है ना, 3.5 शॉटगन माइक वो भी है. बाकी बाकी जो सिस्टम तो है ही है. भाई इशाक ने सुन लिया. इशाक अपने तक ही रखिए, ये बातें बताने वाली नहीं होती ब्रो. मेरा अगर मैं अपना टोटल देखूं, मेरा ऑलमोस्ट 8-9 के आसपास होगा भाई. बढ़िया रीटेक तो था ही. 8-9 मतलब अगर मैं देखो, मैं अगर अपने सिर्फ गैजेट की बात कर रहा हूँ, लाइक गैजेट सारे गैजेट मैं भी यही कह रहा हूँ ब्रो. मैंने तो I have like 2 DSLRs. DSLR नहीं है वो नहीं है. 2 DSLR लगा लो, उसका 2 मैं भी तो ऐसे कैलकुलेट कर देता हूँ. वो खर्चा करना भी पड़ा है. वो भी खर्चा करना पड़ा है भाई. वही खर्चा नहीं किया DSLR वाला. In the second half you can see वो why they prefer करना this पैना है. A-side so अगर much. करना है तो They यार just love आई थिंक retaking अगर it आपको too. देखो So OG can breach लाइक वो into it डिपेंड करता है. from मेरा तो मन है anywhere. पॉडकास्ट बनाने का. From मैंने तो both इसलिए the एक defensive DSLR तो मैंने and पहले the लिया था, attacking. दूसरा मैंने अभी भी लिया. सिंगापुर गया हुआ था, सिंगापुर में बहुत सस्ता था मतलब कंपेयर्ड टू इंडिया. अच्छा. इंडिया में पड़ रहा था 75 का. मेरे को वहाँ पर 3 गियर 7 लेके 50 का पड़ा है. अच्छा. तो आई वाज लाइक क्यों नहीं भाई, मतलब व्हाई नॉट. और मेरे पास किट लेंस थी तो मैंने वो भी नहीं ली. तो फिर मतलब बट इफ यू वांट टू क्रिएट कंटेंट योर फोन इज इनफ. वो तो है भाई, वो तो डिपेंड करता है. यू डोंट नीड DSLR टू क्रिएट कंटेंट. यार यू डोंट नीड एनी गियर. यू डोंट नीड एनी गियर. तुम्हारा एक फोन से ही तुम पूरा कंटेंट बना सकते हो, व्हाटएवर यू वांट. भाई मेरा बेस्ट फ्रेंड का भाई है डीवे टाइम, ओमेगल का कंटेंट बनाता था. 600 के सब है उसकी उस पे, प्लस अब गेमिंग भी कर ही रहा है. जस्ट बिकॉज उसकी 600 की ऐसी फॉलोइंग है. लिटरली उसके गेमिंग चैनल पे क्या स्ट्रीम करता है वो. अभी स्ट्रीम करना शुरू करा है. 50-100 की वॉचिंग आ जाती है कभी भी. एंड लाइक 100 के हो रखे उसके वहां पर भी. मतलब बिना एक वीडियो डाले 100 के मारे थे उसने.
हाँ The वही है player ना has भाई, been spotted. होता है भाई Aziz वो। even gets a second. And तो वही है Revenant, कि मतलब before they वो तो have a मतलब मैं ऐसा है कि मतलब chance जो to मेरा set up जिगरी their आ रहा है उसका execute, भाई है, they just get तो bullied by that ultimate. लाइक बचपन का चड्डी बड़ी नहीं होते हाँ ऐसे, हाँ 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 लाइक जो एक And even अकेला if they दोस्त can होता है जो dodge the मतलब भाई, lasers, they can't वैसे dodge वाला है Aziz's वो, उसका bullets. छोटा भाई है। समझा तो समझा। वही है। Flash once again तो मतलब ऐसा confirms तो the है कि positions of मतलब Revenant और key वो players. कब से बना रहा है कंटेंट, आई थिंक 18 से बना रहा है। मैं क्या 30 बहन seconds क्या left, which are फुद्दू enough चीजें for an कर रहा है। execute, but if they और want जब to go जब उसने मेरे को अपनी suicide or एडसेंस की elsewhere, अर्निंग they have दिखाई, to do मैंने it कहा now. अच्छा अच्छा ठीक है With मेरी Aziz सैलरी से found, डाल दे, छोड़ they दे। can probably start होता है anchoring this भाई, area down and because hope that OG are अभी not मैं यहाँ flanking पे तो them. नहीं बोलूँगा, but there are a That's lot of exactly stuff that why people Ching is like also trying to audience like. plant that turret over there. But Just you so think they of don't get course. stabbed in the back. 30 seconds left. But if they want to hit Bro, the A side, they must do it point now. ये है ना The कि crossfire हम between सोचते हैं कि Tesseract भाई and Antidote of sorts, हम but Antidote doesn't even हम need to reveal himself. कंज्यूमर दें, Nobody would बट expect अपने this को to be the कंज्यूमर की off-angle, तरह and now सोचना they're पड़ता है। hoping to कंटेंट get कंज्यूमर one जो step कंज्यूम to कर it. रहा है, हाँ जिसको Tesseract गेम समझ आ गई ना कि भाई exactly mows them down. कंजम्पशन क्या होती है। अरे भाई साहब Oh my क्या God, OG. स्प्रे ट्रांसफर था। Good hold, good read. Nice. And it all paid भाई off because of अभी the obvious सी early बात है ना, तुम aggression दिन that में Aziz 8-10 showed and घंटे the गेम hunters खेलोगे, who he प्रैक्टिस was करोगे तो thrown in. गेम So तो you वही get a रहेगा वैसा 5v3 था। situation. Yes, you Sexy lose था। a player, but then again you still बाकी have भाई the टीम OG presence सिनर्जी of बहुत the मैटर presence. करती है। And then the time concern as well. ओजी for ने भी Revenant. तो अभी काफी Everything बोलना नहीं just चाहिए, fell चलो apart in the छोड़ो last रहने few दो स्ट्रीम seconds पे, as बट Revenant. ओजी They के are क्रिएटर्स again का तो काफी forced to play on these light माड़ा सीन हो shields गया and था अभी। sheriffs. मारा How नहीं can है, they लाइक दे recover from हैड a देयर situation कॉन्ट्रैक्ट, like उसके that? बाद नहीं Only रिन्यू Ching is the होगा, one who I think ऐसा has कुछ been तो नहीं नहीं performing मेरे को आई नो अ लॉट as मोर देन compared to दैट, the other छड्डो। players of Team हाँ मैं Revenant. भी That अभी is नहीं all बात। आई एम because of श्योर the यू नो play एज that वेल, was able to play. बट We That's need not ਇਹੋ जी ਗੱਲਾਂ नहीं Josh to करते। step एक up मिनट ब्रो, आई if हैव they still फूड, want to contest OG in this map. जस्ट बी बैक। हाँ हाँ Ching is the one who's knocking on the doors of B. Usually it's Paradox who does it whenever Revenant were putting him in the position in the past, but now that he's playing the initiator, he's supposed to play with his और ये चेक teammates. नहीं किया एंगल। Ace doesn't check that Does not angle. check. This Mhm. could be a problem. I'm pretty sure that Tesseract will go ahead and peek, which might give Revenant a chance, but as soon as the spike is down, he uses the drone. He's making sure that he can't recover it. Never mind. A little bit of an overextension, and Josh is able to somehow bring the round back within the bounds of a victory. And at the exact बिरयानी same का टाइम time, हो गया Ching ब्रो। just destroys the Food alarm is bot here. down B main. चलो इट वाज OG वंडरफुल have to be टॉकिंग concerned टू on यू two ब्रो, मतलब defense कोई नहीं, आज तक and it is ऑफलाइन clear बात they करते are हैं किसी hitting दिन ना, Team Revenant. पक्का। हाँ बैठ नहीं के आराम से आराम बैठते हैं और से। like, साथ में करते हैं ब्रो। हाँ। मैं तो यही कह रहा हूँ, लेट्स डू समथिंग टुगेदर। Now Josh लाइक वो on the सिनर्जी side वाली बात ही होती है spotted. कि कोई His अपने next get टाइप shot का और down. जिसको अपना फंडे Aziz समझ even आते हैं ना gets लाइफ the frag के, with a rolling हाँ, frag. वैसे लोग It did push the players of Team OG back. मुश्किल ही but है, they मतलब are यू not- नो यू मेट अ लॉट ऑफ they पीपल। still Yep, are तो not completely off. चलो लेट्स the प्लान ground समथिंग, यू हैव माय position. नंबर। हाँ हाँ बिल्कुल The बिल्कुल, spike मैं कॉल just करता हूँ will फिर। go down, डन ब्रो, but OG चलो with the counter ओके ब्रो, seekers ओके ब्रो, should हैव अ get गुड back वन, into the ओके side. बाय बाय। बाय बाय, गुड नाइट। Now, unless Ching starts Good popping night. off. Oh, and he kills Rafuel as well. Now the tables have turned. Aziz is the only one who can make a difference, but they're so aware. The flashes give you an indication about Aziz's information. Now RBK now with everything to do and nothing going in his favor. Revenant are keeping it competitive. I have to admit that Cosmic Divide from RBK was very impressive. It's an Omni Cosmic Divide. It blocks off everything. A long, a short, the B-side entrance and C. So there's really no place for Revenant to go. And they thought it would buy them enough time, but Revenant make a brave push through the B-side. They get that plant in deep. बहुत क्लोज मैच है यार। And even though they didn't have the man advantage, as long as they could isolate the fights for OG, they knew they would win. And that's what they succeed at. Alarm bot out. Here. कीजे का सेटअप अच्छा है, ये वाला मेरे को अच्छा लगा था। Once again, back Attack, with all the man. weapons they need this time. अगर ये रश ना तो। Let's see if they're able to replicate the result of the previous round. Josh gunning down A-Long, and with the support Tess को of पकड़ लिया Paradox, दो they बार। are able to pick Tesseract off first. Why again? Why without any sort of util you just go in for the solo pick? I do not understand. These are basic mistakes. Basic mistakes which are costing OG early man losses. Good flank from RBK. The turret will most likely spot him. दूसरा भी जाता। But Aziz strikes before that happens. Slowly and steadily creeping in over here. Our Revenant, but Rafuel stops them in their tracks. And doesn't let anyone through the smoke. Just thought that the shorty would help him get something, but absolutely denied. अरे उसका अलार्म बॉट लगा है सर, अच्छा नहीं है। OG once again. They recover the round. Yes, they do. Right away is not ready for Antidote to be in that position. And OG are able to answer right back.
ये राजा भाई के साथ जो बैठा था that was Sky. I thought for once that OG might just lose the round because Tesseract was taken so early on in the round. But then for some reason Revenant hit the brakes. OG, they made some plays. They made some, I'd say, very ballsy plays over there to peek A main first, and somehow Aziz was able to get one tag right to his behind the player he got the frag on, and then the short smoke. Not checking antidote. Get out of my is what way. what led Team Revenant to lose the round. And once again, it has been such a single-dimensional approach from both these teams. They just keep hitting A every other. भाई हाँ वही तो बार-बार They A क्यों clearly आ रही है have their Revenant? preferences now, don't they? Once again, और RVK बार-बार is on the front foot. He's trying to बार-बार do as much as Tesseract मर possible. रहा है, मैं यही But बोलने at least वाला this था। time Revenant are able to get the opening. चलो इस बार तो मान Ooh, सकते हैं कि up down, अल्ट that's है। quite interesting. They're expecting these peaks now. The Raffle misses the dash. Hello. I thought he would just run to CT to save his life, but that's not the case. Wanted to get the shorty frag. He won't. And then the angle. Okay, never mind. He Spike just planted. baits the gun barrel out and is still able to take the head off of right to ace. A 2v4. I mean, and at least Anti is not interested, and Avik is also playing for exit frags. So they gave away Revenant their 10th round, but they'll be happy to save the two weapons they have in hand. Yeah, the two weapons along with हाँ, the या पार वाला 100 का। creds and RVK, there should be enough money to अभी मेरे को भी get doubt the हो रहा है कौन weapon जीतेगा। in the hands of these guys. Maybe even an op. Yeah. I mean, Tesseract doesn't have all that much money, so maybe an op probably can't be picked up by It OG. But if gets- they do get it, if they take a risk and ask one of these players to downgrade to a Spectre or a Sheriff or something, an op can Raffle be can purchased. easily drop. Raffle can easily drop Tesseract, and RVK can give the operator to Raffle. Alright, then we have a game on our hands. Revenant like to play this in the most easy way possible. They try to get into the site, and they know that they can get in if they can get the opening frags, and they're able to do so. The lockdown planted kind of forced OG's hands. It was a fight or flight response. You know, you can either fall back and give up the site, or एमबी भाई रहेगा you इनका can कर just रहेगा try to kill as many Revenant players as possible within the few seconds that the lockdown offers you. And OG thought if they threw enough bodies, if they're able to just win those battles, even if they get detained, it shouldn't be a problem because they would have given their team a sufficient man advantage. That just doesn't happen. OG like playing this in the hard mode now, don't they? Now, just by general tendency, OG should have 3 on a after the beginning of every round. That's just a general tendency that Revenant have shown. Even if they do go to a different side, they show some presence, early presence towards A main. So Doubt fights हो रहा है मेरे को भाई will कौन be जीतेगा taken in A main and A short by both these teams. So that is something they'll need to. भाई डॉक्टर का टैटू देख के याद आया मेरे को But hey, I'd like to tell even Team Revenant that there is a B site and there is a C site too on the map. And I think they've heard it. And Revenant, they are just hard running towards the C site now this time around, I think. Right there. Alright. I think they've listened to you, man. They're heading towards C right away. And there's only a turret to catch anyone coming in. Of course, RVK will also be playing, but he will be cut off by the smokes and the dump of utility that Revenant are about to make. OG are playing this on the edge of garage. They're just hoping that they will be able to get all the frags as the jet dashes inside, but yeah, now the Hunter's Fury will be responded to by another Hunter's Fury. This one to deny the spike plant, but hey, Revenant are not looking to plant it yet. Now that all the util has been drawn out, they will try to stick it. Josh dodges the Astra utility and the Trailblazer too, but now the barrage of flashes comes through. A very convenient ult by Revenant Esports. It cuts the side in half. Leaving the spike open, but that's what happens when the balls come through. The flash should have been expected. Aziz on the back of that guiding light is able to get 2 of them. The fight has turned. Once again, Paradox is flashed. Somehow the shorty is able to give him a little bit of hope, but RVK able to plant the bullet on his brain. And that's it. Nice call out by Ching, but the round is dusted and done. ओ भाई ले गए What a retake. What a retake from Team OG. They started as मुझे soon लगा as they चिंग saw the लेगा players भाई of Team Revenant are entering into the site. They did not even give them a second to think about their decisions, and the flashes were just beautiful from Aziz. They blinded every player. The 2 players holding crossfire outside
भाई कुछ तो wall, blinded. लाइक The बहुत player बढ़िया of रीटेक Zero, किया है इन्होंने, blinded. बट वो Great स्काई blind के shot of फ्लैशेस Aziz, थे ना, and then the frags मस्त just बढ़िया followed तरीके up, से and फ्लैश किया OG अजीत ने. are able to shut this sea aggression down. Yeah, that's one inherent advantage this guy has over the breach. The flashes out of the smokes and these astral walls are just so much more convenient. Ooh, and this इनका is राउंड Revenant निकल heading सकता towards था the अगर back side. रेवेनेंट का Well, एक बंदा यहाँ पे लर कर रहा they होता take गराज clutch से. control, actually, never mind. This is gonna be a C crunch. Anti has been tagged, has Hello? gone away, but inside RVK? smoke plays RVK. Smoke criminal for sure, but finally will be dealt with. So Paradox still keeps it contested. Does not have a lot of ultimates, Team Revenant. Have nothing at all, but Paradox again with the aftershock gets another. Spike down. This in the C. side One will be enemy dealt remaining. after one, but they do not expect Aziz, and Aziz closes up shop. The flank OG. from OG. Yeah, the flank from OG was so perfect. Aziz arrived just in the nick of time, and Revenant had no idea. The Kater util was active, but I guess they probably either smoked it or somehow found a way to just get past it without being triggered. And they had no idea that Aziz was already on the back lines. OG fight back. This was a very closely contested game. रेवेनेंट ने by अच्छा Revenant, खेला, so लेकिन you वही respect छोटी-छोटी गलतियां थी. massively. But OG still undefeated. Without dropping a single map in Split 2, they qualify with flying colors. The bananas are out. अरे वो Bananas are पैराडॉक्स out. लेके आया था ना स्टार्टिंग. Okay then. That's some beef right there, and there's a banana party going on for OG right now. I'm sure they must And have. As soon as Paradox walked onto the stage with that banana, I'm pretty sure they asked someone to run to the market and grab those bananas for themselves as well. Oh my god, what an answer back. What an answer back from the crowd as well. I mean, OG not only on the player front, they are superb with their support too. They just answer right back with the bananas of their own. Yeah, that is perfect. Great Valorant from OG as they go undefeated in the entire league. But still, I would love to tip my hat to Revenant Esports. They made OG sweat more than anyone else did. I don't think OG were in this much trouble throughout the entire split. And Revenant really gave them a run for their money. Now that's what you call a cracking good game of Valorant. You can tell that even the players enjoyed it. The good thing over here for Team Revenant is that they'll feel comfortable, I'd say, भाई बढ़िया against था the यार. other teams, because both मजा आया. games went super close. Even Haven, I mean, they got 10 rounds. What I expected was 6 or 7, but they played like they were here to contest, and they did give OG a run for their money, which again most of the teams were not even able to do so. They were not even able to bring maps close. 13-2 Exactly. against Velocity, 13-7 or 8 I think in the second map. Those were very quick games to say the least between the two teams. Now Never- a team like Revenant comes in and shows a performance like this. It's just कल किसका insane. मैच है? मेरे पास Exactly, schedule it आया is था रे. insane. After their performance against Militant, Like, we were all I mean, doubting them shit. to some extent, but now against OG, they have really proven that they are here to play. I would love to see how they perform against Velocity next. But all of those discussions for the post-game segment, we'll be back after a short break. कल है Velocity versus Revenant. बढ़िया था भाई, मजा आया. ठीक है, कल है Velocity versus Revenant. तो गाइस कल मिलते हैं. अभी Velocity versus Revenant में थोड़ा जल्दी स्ट्रीम स्टार्ट कर लूंगा, फिर उसके बाद में सेटिंग कर लेंगे. ठीक है, आज तो मैं भी थोड़ा लेट हो गया, कुछ काम भी कर रहा था और एक OBS भी अपडेट पे चला गया. ठीक है, तो कल मिलते हैं गाइस. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. आई होप यू गाइस एंजॉयड द स्ट्रीम. बाय बाय, हैव फन, टेक केयर, गुड नाइट एंड पीस. Peace guys.